Okay, yes, Rahul Afridi, how are you? कैसे हैं आप ठीक ठाक खैरियत से हैं? Yes, sir. How are you doing? अच्छा सर सर वासिफ जी 5 मिनट बाद बस हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। 5 मिनट बस हम सही और है वेट कर लेते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है? ठीक है, फिर आपको पता है क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एग्जैक्टली बाकी जो या स्टूडेंट ज्वाइन कर देंगे, 9:35 हो रहे हैं, तो आफ्टर 5 मिनट हम क्लास लाइव जा रहे हैं। जब तक आप स्टूडेंट से असाइनमेंट्स का पूछ लें और आज के डिस्कशन का पूछ लें और प्रीवियस का पूछ लें। जी ओके ये आप लोग पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये आप सबसे की कोशिश ये किया करना, देखिए क्लास जब भी आप लेते हैं वो कहीं आप बाहर ना लिया करें, कोई रूम हो जहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन हो, फॉर मतलब बाहर का कोई भी नॉइस ना आ रहा हो, तो उधर क्लास किया करें सही। क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे भी जो एक्सटर्नल साउंड आ रही होती तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और अगर बाहर से रिस्पॉन्स मतलब ऐसे शोर आता है तो मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग क्या बोल रहे हैं सही। तो कोशिश ये करें कि क्लास हमेशा जो है ना किसी अच्छी जगह पर, खामोश जगह पर लिया करें। Okay, and another thing is, yes, so what about your assignments? Yes, Arif. What about your assignment? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you, Arif? Sir, I am fine. What about you, sir? Alhamdulillah, I'm doing great, as always. Okay, what about your assignment? I wanted to get a know-how of it. Sir, I didn't did my assignment, sir. Okay, can I ask the reason? Sir, in 3 days I was so busy, sir. Okay, but try to make up Yes, for it. So, yeah, sir, I'm not not making excuses it's okay. because I have a lot of work. That's why, sir. Okay, Tonight it's okay. I am also sick also. That's why still I am taking my class. Okay. Okay, no, Arif, please try to submit the assignment by today, and hopefully Mm-hmm. the rest of the people, the student have joined, please also submit your assignment on time, because this is the part we are going to check you whether you are improving or not. So this is our Mm-hmm. responsibility when the teacher is going to the assignment. So everybody has a responsibility. Please make sure that do the assignment on the time and prepare yourself before the class. Please join before the like 10 minutes so we can start the class on time. Otherwise the class will go dead. Okay? Okay, sir. We will do our best. We will try. Yes, It great. will good for our Yes, learning, sir. yes, great. So Okay. Basu sir, so we Yes, can sir. start the class so you can proceed. Yeah, I think we should start it because yeah, time is getting wasted. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Let's start it. Uh, okay, so today our topic is context. So, do you have any idea before starting the class? I'll ask a question. Do you have any idea what is context? Mm-hmm. Anyone? Uh, Yes, can Arif. I Yeah, say? go on. Yeah, sir, go on. Context means to join two sentences. Mhm. Um, yes, sir. Okay, do you have something else to say regarding context? Uh, uh, no more, sir. Okay, good. Okay, thank you for your response, though it was not quite much on target. Okay, Benafsha Mohammed, what do you think the context is? Yes, Benafsha.
I think you can go with from Yeah. another student. Okay, so Iqbal sir. First of all, tell me, Iqbal sir, how are you doing? How are you? How are things doing at your end? And then kindly tell me, what is context? What do you think context is? Sir, context is basically the points or the features which we have done before or after something. Mm-hmm. Okay, not quite much on target though, but thank you for okay. One more student, then I'll explain to you what context is. Yes, Mala Abbasi. Whoever Mala? going to give the answer, please try to make sure open your camera. If there are any ladies, Yeah, she can exactly. cover. Please open your camera so it will give your boost your confidence. Otherwise, you will not get the confidence. Try to open the camera and give the answer without any fear. Okay. Hello. Yes. Okay. Okay, chale, okay. Okay, I'll tell you now what a context is. Context is basically a situation or a condition in which we are talking. Okay, for example, if we are in a library, we are studying books, that is the context of a library. If we are academic context, okay. If an accident happens and people are rushing or those hurt or injured people towards hospital, now this is the context of an accident and a hospital. And also if there is a marriage going on, so that is the context of a marriage. So what is context? It is basically a situation, some specific sort of situation. And regarding that context, we have some specific choice of words. मीन्स कि हम क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट जब भी होता है तो उसके हवाले से हमारे जो अल्फाज होते हैं उसी तरह के होते हैं, सही. इफ द पर्सन इज नर्सिंग वी विल चूज दोस स्पेसिफिक वर्ड्स रिगार्डिंग दैट कॉन्टेक्स्ट. कि शायद हॉस्पिटल के हवाले से होगा तो एक डॉक्टर क्या यूज करेगा, जब मरीज को वो कर रहा होता है, ये जब मरीज की ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर तो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स भी उसी तरह के वो किए जाते हैं, बोले जाते हैं, सही. इस तरह जो पेशेंट का पता करने आए होते हैं वो भी जो वर्ड्स यूज करते हैं वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, अस्पताल के हवाले से होते हैं, सही है. तबीयत का पूछते हैं, सेहत का पूछा जाता है, सही है, दवाइयों का पूछा जाता है. सो व्हाट आर दीज वर्ड्स? अब दवाइयों का पूछना, सेहत का पूछना, दीज कम इन द कॉन्टेक्स्ट, सही है. तो ये सारे वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, सही. So today our lecture will be about first demonstrative pronouns. What are demonstrative pronouns? We'll be using those. Then context of shopping, and then context of condolence and thanking. See? So okay. Now, could you tell me who's your biggest motivation in life and why? But first of all, let me give you a few good examples of motivation. For me personally, my personal motivator is Andrew Tate. If you have heard his name, he's a multi-millionaire. We have some other great names like Jeff Bezos, that of the CEO of Apple, Apple iPhone, right? And we have other names like Elon Musk. See, so these are the biggest motivation. Even for some people, motivation may be someone's father or someone's mother. So now my question is, who's your biggest motivation in life and why? You'll also have to tell the reason, okay? Because that is also part of this question. So yes, who's gonna go first? Hello, sir. आप एक काम करें, Yeah. turn by turn, take the names and ask them individually. Okay, I'll go with that. So That would be better. yeah, so starting with you, Mohammed Faisal. Yes, Faisal, can you hear me? स्टूडेंट्स आप लोग सारों को सर बासित की आवाज आ रही है? इफ आ रही है प्लीज काइंडली आप लोग एक्टिवली जो है वो रिप्लाई करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम पे क्लास को जो है वो कर सकें. ठीक है, आप पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है सारों को स्टूडेंट्स? यस मिस. ओके, आप सर बासित को रिप्लाई करें. ठीक है. Okay, जी, Mohammed Faisal. So I was talking to you. Could you tell me who's your biggest motivation in life and why? Sir, my biggest motivation in my life is to be a Yes, go on. Mr. Faisal, please carry on. If whether you are going to wrong, don't need to worry about that.
Yeah. Okay, Be sir. confident, focus on your voice, and tell the confidence with the confidence. And Don't need also to worry about it. yeah. And also one more thing, Faisal, I really like if you turn your camera on right now, okay, as you're responding. Okay, sir. Mala Abbasi, I'll also be coming to you. You know, that's Faisal. I think it's a signal problem, sir. Okay, So okay, camera is okay, it's okay. It's okay. Okay, so kindly answer me the question, who's your biggest motivation? Who is that person that gives you motivation in life? And why is that person your motivation? We can take the answer from Miss Mala Abbasi. Yes, Okay, Miss Mala okay. Abbasi, we are going to unmute you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Mala, how are you? Sir, my biggest motivation in my life is my father. Okay, And your father. because in my childhood, I when I see him, he always take care about our health, about our studies, about our clothes, about Mhm. everything. He always cares, and he's also a very honest man, and also help the others. And everyone like him in every time he helped others. So whenever, and also a very educated and a talented man, in spite of Mhm. that he was born in a village, and he don't have good facilities of education. In spite of that, he is just metric, but he can understand every concept of even master's level. I also always take the guideline about my education from him, and he always give me the right answer. And um, that's why I always thought that I will be make my life according to her rules, her Mhm. lifestyle. Yeah. And mostly I follow him. And Oh, last 4 months oh, he died. And oh. but Okay, that. I miss him always. Okay, that's sad, and we have I you think have this my is condolences. Yeah. this is a very great motivation, Mala, and we have very deep conversation with your father, and Yeah. may his the rise hang in Jannah. So this is the Amen. motivation for you, and think about Mhm. your father when he's working for you, and then this is a time you need to improve yourself, and don't need to Yes, worry about that. Okay, always be motivated and yes, grow. Mhm. Thank you. Okay, Thank we you can very take the much. answer from Mr. Iqbal. Yeah, yeah. Okay, thank you very much for those kind words, sir. Let's go to Mr. Iqbal. Yes, sir. So, who's your biggest motivation in life? Yes, sir. Being a Muslim, for me, the great motivation, spiritually and ideologically, is Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi No wasallam. doubt, sallallahu alaihi wasallam. Yeah, no doubt. And in this world, at present, physically, for me also, my father is great motivation for me Great, great, because great. he was a retired school teacher. He Mhm. made great attempts and great sacrifices to grow up us, all Mhm. of us. He he provided all such facilities for our education, for caring. He was great man. He always take the straight lines. He was always spoken speak truth. He never compromised upon principles. And same thing I also took from him, and I also tried my level best always to give his name a great marks and always try to follow him, the teachings, the principles set by him, and that is why that I do my level best. Always I do my level best to follow him and never compromise upon issues and principles by his teachings as well. Thank you very much, Iqbal, sir. Thank you very much. That's really motivating answer. Okay, let's one more person, then we'll be moving out. Usman, I'd really Yes, appreciate sir. to know more about you. Who's your motivation and why? Sir, learning is my motivation. Mhm. उर्दू में एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में भी बता सकते हैं तो मुझे ज़्यादा Try to समझ नहीं communicate रहेगा it. Try to communicate in English.
Okay, sir. It's okay to commit errors. It's fine. ठीक है. Noted, sir. Learning new things is my motivation, daily motivation, because when we learn new things, we are more confident. Yeah, good. Such as personal and professional growth. Deep. Yeah, go on. Don't need to worry about Usman whether you are going wrong. Please go strong and do your best. Don't need to worry about it. We are also learning with this class, okay? So you don't need to worry about that. Yes, exactly. Because and the need to stay relevant and competitive in the changing world. That is why my motivation is learning new. Great, good. So, in other words, I would say that you are your own motivation, and that is, I think, that is very rare and unique, and I really appreciate it. So, thank you very much, Usman. Okay, we'll move on to the next slide. Okay, let's recall a little now. What did we learn in the last lecture? Those were nouns and articles. Nouns we had countable and uncountable nouns, and articles we had A, N, and B. Let me share the screen with you regarding that. Okay, we learned about nouns. We had okay, we knew that nouns had countable, both countable and uncountable parts, and countable part had singular and plural forms. Okay, so we also learned that uncountable are those nouns which cannot be counted, but we use measure words to count those uncountable nouns. And we then did some activities regarding plurals and singulars, and we also learned about regular and irregular nouns. So regular nouns are those that end with either S or ES, and irregular has their own forms. Okay, and there were a lot of, by the way, there were a lot of types, I'd say, in regular nouns. That of S, that of ES, VES. Okay, but we also had, yeah, we also had exceptions. Okay, there are also some nouns which do not qualify for these specific rules. सही, उनके जो है ना, क्या होता है कि कभी कभी वो ऐसे nouns होते हैं जो rules को follow नहीं करते, तो उनको हम क्या कहते हैं, exceptions कहते हैं, और ये सिर्फ noun के लिए limited नहीं होता. It may fall into any category. सही है, वो words भी हो सकते हैं, वो proverbs भी हो सकते हैं. सही. ओके, तो क्या है कि हमने फिर फर्दर वी लर्नड about specific rules about consonants and vowels. Okay, give me a moment. Sorry about that interruption. So, okay, then we learned about articles. See, how and where and why do we use the article a and how and where and why do we use article the. सही, तो इनके अपने कुछ रूल्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, if you remember. And then we did some activities as well. तो ये जो है ना एक बड़ी लिस्ट थी उसमें कि where do we use the article the. This was a little bit of our previous slide. Now let's go to the new one. Context. Okay, so I hope you have recalled the previous class. Now going towards introduction. Yeah, so I did give, if you remember, I did give you a mini assignment, I would say, about introduction. कि आपने क्या करना है? You will have to introduce yourself. सही? So now, and you'll have to do the introduction with me. Consider that I'm the interviewer and you're the interviewee, so I'll be interviewing you. See,
कि लेट्स से कि आप लोग आए हैं यहाँ पर इसके लिए I'll give you the context first. So the context is ताकि आप लोग को और बेहतर आइडिया हो जाए कि what a context is. So the context is कि the context is that of interview and you are applying for the job of English language teacher. See? So regarding that, I'll be asking you the questions, your experience, your location, and all of these things. Okay, so Sir, the slide is yeah. Sir, is there could be anything like whether they are joined for the English Training Center, whether they joined for the accountant, whether they are joined for the digital marketing, whether they joined for the Yeah, manager position. Is there anything purpose? So yeah. we don't need to hold for any like position, so they can tell about anything. Okay. Thank you very much, sir. Okay, so who will go first? Just raise your hand. Yeah. Okay, Mala Basti, thank you very much. Yes, Mala Basti. So I'm the interviewer and you are the interviewee. Okay. So we'll clear just like interview. Yes. So Assalamu alaikum. How are you, Mala Basti? Why? Yes. Okay. So could you introduce yourself? Sir, I am Mala Basi and I have done a master's and I have done my bachelor from Punjab University, FA from Government College, Rawalpindi, and BA also. And after this, I have done my B.Ed and done my master's in Urdu subject. Good. And I have teaching experience at least 3 years in some private schools. Okay, good. Three is a good thing. So why have you applied for our company and for which seat, which vacancy? For teaching. Okay, for teaching. Great. And why do you think you have applied to specifically our institution? Sorry, sir, I can't understand your question. Okay, so why have you applied to our institution instead of others? Sir, I listen that your school is pay much salary, first of all, and the second, the reputation of your school is best, and here's many facilities for the teachers like medical and some others, and that's why I applied your school. Oh, okay. Thank you very much, Mala Basi. You are hired for the job. Okay. Okay. Thank you. Okay. Sir, please tell me the salary as well. Yeah. Tell me the salary package. Okay, we'll discuss it later on. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Okay, one important thing is when when we are doing the role play, you'll have to turn on your camera. So yeah, so as I said earlier, whenever you are responding, you have to turn on the camera. That is essential part of this whole language thing. Okay. So yes. One more thing, everyone need to take the part. Yeah. All students will need to take the part in this activity. Okay. Exactly. So okay. So when anybody going to take the because this is the real moment, this is the real part. When anybody going to when anybody going for the interview, I will go to the pro tip. What how you can represent yourself in the interview. So I will provide the pro tip after this activity. Yeah. Okay, carry on. Okay. So yes, I'll go with Iqbal Saab next. Yes, Iqbal Saab. How are you doing? I am fine, sir. Okay, so now could you tell me why have you applied for this job and could you first introduce yourself? Sir, I am Muhammad Iqbal from Gujarat. I am 49 years age. Okay, good. And currently I am doing my own business as a dairy farmer. Okay. And I have done my graduation in law, and my experience in the business of dairy farming is more than 14 years of age. Okay, great. So for which seat have you applied? I have came to know that you are required a manager post. For the same reason, I applied for a manager. Okay, so good. And why our institution specifically? Why not others? I think that your institution has great reputation and great name in the field of education. And I also, being an administrator of my own business, I think that I can handle
very accurately and will with good approach. I can manage your things, your activities in a better way. Okay, thank you very much. So I think we must hire you for specifically for your experience alone. Thank you very much, Okay. Iqbal sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Okay. Someone else raised a hand as well. So who was that person? I didn't see the name. Yeah. Okay. Rahat Afid. Yes. Let me unmute you first. Yes, Assalamu Rahat. alaikum, sir. Wa alaikum assalam. How are you doing, Rahat? My name is Rahat Khan. I am from Khyber Agency. My age is 30. Currently, I working in the banking sector. My qualification is BBA from University of Peshawar. I have 2-year experience in banking sector. Okay, great. And now, could you tell us for which seat have you applied in our institution? Sorry, sir. For which seat or for which vacancy have you applied? Which vacancy? Yeah, for which seat or for which post? I was apply for MTO. Okay, MTO. So now, and why should we hire you? Why do you think we should hire you? Because my banking like my conversation and I can handle a customer. Okay, so you can handle multiple customers. And one more question I'd like to ask is, why have you applied for our institution? I was see your advertisement on Facebook, and then I can apply for online courses because I don't have any time on day. So I thinking I can learn English on night classes. Okay, okay. So thank you very much, Rahat. So we'll discuss the salary later on. Okay. Okay, thank you. Yes. Welcome. Okay, Osman, kindly turn on your video and let's get to a conversation. Yeah. Yes, sir. My name is Mohammed Ali. I come from Lahore. I am 25-year-old. Yeah. Sorry, sir. I recently cleared my DA in electrical engineering. My hobby is learning. Okay, great. My hobby is learning and exploring something new. I have 1 year experience in store in charge in inventory management. Okay, great. So why do you think we should hire you? Because I am a hardworking student and want to learn something new. Okay. Okay, so I think learning is a good motivation, and in an institution, if you're not only giving but you're also taking from that institution something besides salary, I think that's a great thing. So, and why our institution? Why not some other institution? Because your institute promote our youth and give us more knowledge. Okay, okay. So thank you very much. Thank you very much, Osman. Yeah. So yes. Yes, Riaz Okay. Ahmed. Yes, Riaz. No, we have done from Riaz, I guess. Or was it? Yes, Riaz. Please mute yourself. Okay. Yes, Riaz. Riaz, are you with us? I think we can go with Binafsha. Okay, Binafsha, we'll go with Binafsha. Yes, Binafsha Mohammadi. I think Riaz is there. Yes. Sorry, Okay, Binafsha, okay. we can take the Riaz first, and then we can go with you. Yeah, welcome to us. Yes, Riaz, please. Wa alaikum assalam. So Riaz, could you turn on the camera if you're having no issue? Assalamualaikum. Wa alaikum assalam. Yes, Riaz. So could you introduce yourself? Hello. Yeah, go on. Yes, Riaz. Can you listen to us? Hello. Riaz, can you hear me? Maybe there's some voice issue, so we can go with the Binafsha. Yes, Okay, Binafsha.
Hello, Yes, Benafsha, how are you doing? I'm good, sir. What about Okay. you? Alhamdulillah, I'm doing great. I'm doing awesome. Okay, so Benafsha, could you introduce yourself? In the name of Allah, I'm Binafsha Muhammadi, and I'm graduate for the school, and I'm learning Marathon English College. This much. Okay, so could you further tell us about your qualifications and experience if you're working anywhere right now? Experience. Mhm. I don't know. Because I'm very young. Mhm. How should Okay. I say? Oh, yeah. Okay, it's okay. So could you now tell us why you have, for which vacancy or for which post have you applied in our institution? For teaching. Okay, for teacher. And should I ask why ask the institution specifically? Because I'm good to Mhm. I don't know, sir. No, no, it's okay. You just have to answer. You just don't have to answer me correctly, but you will just simply have to answer. So now could you tell me why our institution specifically? Why not other institution? Sorry, sir. I don't get it. ओके माय क्वेश्चन इज कि आपने हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए क्यों अप्लाई किया किसी और इंस्टीट्यूशन के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया क्योंकि यू हैव टू because आंसर of इंग्लिश या this, because of this is online classes. This is easy much, and this is I have a free time. I'm all night, because of this, I'm applied. okay okay Am I right? so yeah, it's okay. As I said, that there is no right or wrong here, but we will have to keep on learning from our minor mistakes. So thank you very much. I think Thank you you, are sir. selected for the job. Okay. Okay, so we'll carry on. Okay, so some of you have introduced yourself. The others who are not available, we ask. Arif Hussain. Yeah, Arif Hussain. Yes, Arif. Yes, sir. Okay, so could you first turn on your video camera and could you also introduce yourself? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. I'm Arif Hussain. I came from Quetta. Okay, I great. am 28 years old. I have now I have my own business, Okay, great. and my qualification is FSC, and I have done my BS like third. I have done my third semester BS, and I have experience of like teaching, like taking tuition. Okay, okay. So, do you think you are with less experience? Do you think you are capable for this job? Yes, sir. Okay, and what do you think makes you capable? I didn't get, sir. I mean कि आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी कौन सी काबिलियत या खासियत है which is good for our institution to hire you? Sir, I have experience like that. I observe the students how I think all the students are same, and no one is we can't say that he is sharp. I should teach this or teach her or him, and I will also try my best to learn them.
Okay, great. So I think one of your abilities is not only to teach but also to learn from students, and I think that is unique ability. Okay. So and why have you applied to our institution? Why not some other institution? Because your institution is better than others. Whatever we in our mind, that is our your institution is going with our mindset. Like whatever we want, we can do with rule and regulation also. Okay, okay, great. So thank you very much. I'll be thinking about hiring you. Okay. Thank you very much. All right. Thank you, sir. Okay, my pleasure. Okay, I think we are left with Only yes, Riaz. Yes. only Riaz. Okay. So Riaz. Yes, Riaz, are you with us? Yes, sir. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. So Allah Riaz, sir. could you? Yes, Yes, sir. sir. Fine. So, sir, please don't mind because poor network. Okay, okay. Okay, I you live can in carry on a without the village. camera. You can Okay, you okay. can carry on with your voice only. Okay. Yeah. Don't need to worry about. Hello. Okay, so now could you introduce Hello. yourself? Sir, Assalamualaikum. Walaikum assalam. Hello. So Sir, Assalamualaikum. Walaikum assalam. Yes, Riaz, I can hear you. जी सर नेटवर्क का So मैंने कहा प्रॉब्लम है it's okay. But now could you introduce yourself? जी सर Yeah, go on. I'm Riazan from class BA from a college side. Okay, yeah. So I interested. yeah, go on. I interested speak language Urdu, Hindi, and simple English. Okay, great. So for which position have you applied at our institution? What, sir? For which position or post have you applied at our institution? जी मैं interested in SST teacher jobs. Okay, for the job of teaching. And why our institution? जी sir. Why have you applied at our institution and not some other institution? जी because it's my interest. I Could can you, teacher. yeah. So could you further explain this answer? वो सर मतलब कि my question, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट के लिए क्यों अप्लाई किया, किसी और के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? And kindly explain this answer. जी sir because your web or your center is a best of all of these best because I choice your center. Okay. Because your study is a strong and study way and talking power maybe all of study matters. Okay. So, okay. So thank you very much for applying on the job, and I'll be thinking about hiring you. And sir, a request. Yeah. And sir, please don't mind because first time I talk first time in English. It's okay, and I think you did brilliant talking in English without feeling low on confidence. Okay, because this is how we learn. And sir, I make a motivation because you. It's okay because this is how you are going to gain motivation by committing error. Okay, committing error is one of the biggest parts in learning anything new. Okay, so I think you did a great job. Thank you very much. Because sir मैंने वो motivation पे बनाया था my motivation father is my father. नेटवर्क में कोई मसला था इसलिए मैंने बता सका. It's okay. Thank you very much. आपने यहाँ पर हिस्सा लिया. That's a great job. Okay, I think we are good to move on towards I want to say something in the last. Yes. तो मैं उर्दू में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए. अच्छा, एक तो ये कि माशाल्लाह से आप लोग का पहला एक्सपीरियंस था जिस तरह आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट करके बताया, तो सबसे पहले आप लोग अपने लिए तालियां बजा लें
क्योंकि इतना आसान नहीं है Yeah. 10 लोगों के सामने बैठ के वीडियो में बात करना। आप सबके लिए खास तौर पे आरिफ हुसैन से मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह उस लड़के ने पार्टिसिपेट करा। और रियाज हो गया, सैयद बिनफ्शा हो गई। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाए, मैं 2-3 आपको प्रो टिप बता देता हूँ, ठीक है। कहीं भी आप इंटरव्यू कहीं भी देने जाते हैं ना, पहले तो ये कि आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वही आपको गुड और बैड बनाती है। अगर आप रिलैक्स होकर बैठे हुए सीट के साथ, झूल नहीं रहे, हाथ नहीं बन रहे, रिलैक्स हो, स्माइल करें, ठीक है, अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं। दूसरी बात, जब सीवी देते हैं तो वो अपने आप को आपसे वो बोलेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे अच्छी प्रो टिप है कि आप उसको बोलें कि जैसा कि सर आपके पास मेरी सीवी है और मैंने अप्लाई करा है, तो आपके पास मेरा सारा बायोडेटा है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं अपने आप का इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। एम आई राइट सर, वासित और रॉन्ग? Exactly, यही बात है सर। और इसमें सबसे से मेन चीज होती है वो या इंटरव्यू जो होता है वो आपको चेक करना चाहता है कि आपका क्या आंसर होता है। अगर आप सिंगल स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी हाजिर दिमागी पता चलती है कि आप उसको बोलते हैं सर जैसा कि आपकी मेरे पास सीवी है, आप गो थ्रू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा, मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, आप अपने बारे में बताएं। हॉबीज को बताने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं बताएं कि मैं इतने बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। प्रिसाइज होकर चलें। एग्जैक्टली। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, स्टडीज के बारे में बताएं। आपने स्टडीज क्यों ज्वाइन करी, आपने क्या कहते हैं स्टडीज, अगर फर्स्ट करें, अगर कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो आप अकाउंटेंट की फील्ड में क्यों जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन करें। और कम बोलें, ज्यादा से ज्यादा जितना वो सवाल करे उससे ज्यादा ना बोलें। उसके अलावा जी जी। वो आपसे पूछता है कि हम आपको हायर क्यों करें, आपने ये नहीं बोलना कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ये है यू है ये है, ठीक है। आप उसको बोलें देखें सर, जैसा कि आप मेरी सीवी से गो थ्रू करें, और मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और मैंने आपकी कंपनी के बारे में काफी रीड करा है कि आपकी कंपनी माशाल्लाह से बहुत ग्रो कर रही है और एम्प्लॉय को यहाँ पे वैल्यू करती है। तो मेरे लिए एक जगह पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि मैं जहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ, काफी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, और मेरी शायद मैं समझता हूँ कि मेरी लर्निंग कहीं स्टॉप हो गई है। तो हो सकता है जब मैं अगर आपकी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ तो मैं नई चीजें सीखूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह आईटी का एक जमाना है, तो आपकी कंपनी आईटी की स्किल्स में काफी अच्छी है और एम्प्लॉय को वैल्यू करती है। तो मैंने इसलिए आपकी कंपनी में अप्लाई करा। और वो बोलता है मैं आपको हायर क्यों करूं, तो सिंपल सवाल है सर कि हायर मुझे जॉब की, एक तो ये कि आपने सर जिस तरह मुझे सबसे पहले सबसे बात है, मुझे आप यहाँ पे जॉब की एक नीड है। और जो आप जो देख रहे हैं एक अच्छे एम्प्लॉय के अंदर, वो सारी मेरे में क्वालिटी है। क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग के वाले से, पंक्चुअल के वाले से। और मैं जो भी मेरे कंपनी में मैंने काम करा प्रीवियस में, मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद एक अच्छा एडिशन कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और मेरे में एक जाहिर सी बात है, एक लर्निंग की एक फायर है मेरे अंदर, एक आग है, मैं सीखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब यहाँ पर अपनी कंपनी को ज्वाइन करूंगा, जब मुझे अपनी कंपनी को सिखा रही होगी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी कंपनी में अपनी वैल्यू ऐड करूँ। दैट्स वाई यू नीड टू हायर मी। तो ये मोटे मोटे सवाल होने चाहिए, ठीक है। और सैलरी का अगर पूछता है आपसे, अगर कोई अगर आपको पूछता है कि आपको क्या सैलरी पैकेज है, क्या आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपने टू बी प्रिसाइज होके शर्माना नहीं है, कुछ नहीं बोलना। आप बताएं कि लिटरली सर कि मैं अपनी कंपनी में ये अर्न कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट ये करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल तौर पे भी अपने आप को, और एक क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव तौर पे भी अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही वो मतलब ठीक है, हम आपको कंफर्म कर देंगे, बता देंगे, ठीक है, थैंक यू करें, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। और उठें, हाथ मत मिलाने की कोई जरूरत नहीं है इंटरव्यू से, सिंपल उठें और अपना रिलैक्स होकर चले जाएं, ठीक है। ये मेरी तरफ से प्रो टिप थी, आप इसको नोट कर लें, ये आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे जब आपका इंटरव्यू देने जाएंगे, आपके लिए बहुत काम आएगी। ये रिकॉर्डिंग में भी आप इसको बार बार सुनिएगा। एनीवन एल्स शेयर योर फीडबैक। कोई भी अगर स्टूडेंट से वो अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है, कोई पूछ सकता है, वो पूछ सकता है। यस एनीवन, क्योंकि आप लोगों में से इस तरह हैं कि हु मे हैव डन इंटरव्यू, सही, तो उनको भी थोड़ा बहुत इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा। यस यस एवरी स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग अपना फीडबैक दें, जो भी सर फहाद ने बताया है, जो सर बासित आप लोगों को टीच कर रहे हैं, ठीक है। वी वांट योर फीडबैक्स, ठीक है। एंड आई एम रियली 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 इम्प्रेस्ड विद आरिफ हुसैन। मुझे वाकई सर फहाद, आई टोटली एग्री कि वो एक बहुत ही मोटिवेटेड स्टूडेंट है। हमारे दूसरे भी सारे स्टूडेंट मोटिवेटेड है, बट उनकी जो कॉन्फिडेंट है कि चाहे सही हो गलत हो, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स द मोटिवेशन, ठीक है। एंड दैट्स द एग्जैक्टली। मोटिवेशन वी वांट, एंड फिर करेक्शन करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स द मोटिवेशन। थैंक यू सर फहाद दिस फॉर द प्रो टिप। आई होप आप सारों को ये डेफिनेटली काम आएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ओके सर, यू कैन कैरी ऑन। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए जी, तो सरफाद ने कुछ हमें बड़ी अच्छी टिप्स दी, सही। सो इन टिप्स को आप लोग, यू विल हैव टू कीप दोस टिप्स इन माइंड, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू
80 to 90%, even 100%, you are gonna get selected for the job. Okay, let's carry on with the next slide. Okay, words. So देखें, you have all the words and you have all the meanings. सही? So we're gonna start this with a little activity, but before that मैं आप लोग को ये सारे words समझा देता हूँ in Urdu. सही के so that you can make better sentences in English. Condolences, ताज़ियत, मतलब जब हम किसी की फौतगी पे क्या करते हैं, जाते हैं या कोई गम से गुजर रहा हो, हम क्या कर रहे होते हैं, वी ट्राई टू शो एम्पैथी और सिंपैथी टुवर्ड्स देम. सही, हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं उनको कि वी आर विद यू. से कि यू डोंट हैव टू वरी, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू नीड, वी आर ऑलवेज देयर स्टैंडिंग बाय योर साइड. दैट इज कॉल्ड कंडोलेंस. इंडेवर, कोशिश करना, मेहनत करना, टू स्ट्रगल, टू कैरी ऑन, टू नॉट गिव अप, दैट इज कॉल्ड इंडेवर. Okay, ascend, चढ़ना, चढ़ाई, मतलब कि when you are progressing and you are struggling and you keep moving forward and you are going towards some higher altitude, that is called ascent. Resilient, लचकदार. Resilient उसको कहते हैं मतलब कि whenever whatever is coming at you, you just stay strong. सही, आप क्या करते हैं, resilient basically flexible को बोलते हैं कि आप इतने flexible होते हैं कि हालात के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं. That is called resilient. और आप हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं मानते. नाउ कंपेलिंग, ताकतवर. सही, ये कंपेलिंग कैन बी एनीथिंग कि जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फोर्स वाली चीज हो, एनीथिंग दैट इज वेरी मच फोर्सफुल, दैट इज कॉल्ड कंपेलिंग. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी आइडिया, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी सम स्पोकन वर्ड्स दैट मे बी कन्विंसिंग. ओके, ingenious, ingenious means होशियार, तो इट gives us the same meaning as genius. genius वर्ड को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. सही. serene, सीरीन मीन्स पुरसुकून. हम कहते हैं कि स्टे कॉम और स्टे सीरीन, मतलब कि ये है कि बहुत ही ज्यादा कोई पुरसुकून कोई भी चीज हो, कोई माहौल हो, दैट इज कॉल्ड सीरीन. टेनेशियस. ओके, one more thing I would like to add is when I am pronouncing these words, you also need to focus on my pronunciation. See, tenacious, मजबूत. See, strong, prolific, अनमोल, unique. कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा खास हो, यूनिक हो, one of its kind, that is called prolific. And ambiguous, okay, this word here is ambiguous. Mubhim. Now what is ambiguous? Ambiguous is anything that gives us multiple meaning at the same time. हमारे पास कुरान मजीद में ऐसी बहुत सारी आयत हैं, वर्ड्स हैं, सही है, जो ambiguous हैं, जिनके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं. कुरान मजीद या all of these holy books, these are very much ambiguous. एक जनरल आप लोग को एक थोड़ा सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता दूंगा कि हमारे जो देखें आजकल के दौर में देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, स्पेसिफिकली थ्री मेजर रिलीजन्स आर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज्यूडाइज्म. सही, यहूदियत हो गई है, क्रिश्चियनिटी हो गई, ईसाईयत और इस्लाम हो गए हैं. तो ये थीम क्यों इतने मतलब और ये और फर्दर डाइवर्सिफाई हुए हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थ्री बुक्स, कुरान, बाइबल एंड ओल्ड टेस्टामेंट, यहूदियों वाली जो किताब है, ये क्या है, इनमें ऐसे ऐसे आइडियाज हैं जो कि कुछ जगह पर बहुत ही ज्यादा एम्बिग्यूअस हैं. सही ना, व्हाट डू आई मीन बाय एम्बिग्यूअस के, अब आप एक आयत और इफ यू रीड अ वर्स, आपके जहन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी, आप कहेंगे कि इस आयत का तो ये मतलब भी निकलता है, इस आयत का दूसरा मीनिंग भी निकलता है, मतलब इस आयत के तो बहुत ज्यादा मीनिंग निकलते हैं. सही, अगर इसी आयत को अपने टाइम में पढ़ा जाए जिस टाइम वो आयत नाजिल हुई थी, तो उसके तो और मीनिंग निकलते हैं, और अगर अब की फॉर्म में देखें तो और मीनिंग निकलते हैं. इसी वजह से क्या है, हमारा जो मतलब मेजर रिलीजन इस्लाम जब आया, वो फिर फर्दर डिवाइड हो गया क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म में. सो दैट वाज बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी ऑफ द बुक. सही, and I think this is one of the most beautiful things about ambiguity, about having multiple meanings of the words. So now coming towards the activity, I'll be choosing two person. One person will have to take one word and use it in a sentence, and another person will have to answer the question asked by the first person and use another word, use it in their own sentence. सही, तो एक बंदे ने क्या करना है, pick up one word, इनमें से कोई सा एक वर्ड उठा लेना है and use it as a question के तौर पर यूज करना है, और दूसरे बंदे ने क्या करना है, pick कोई दूसरा वर्ड आप लोगों ने उठा लेना है and answer that. सही, so I'll be going with for this activity Sir Basit, can you give some example with some words so they can better understand? Please use some two words and make sentence, then they can better understand what we are trying to say. Okay, yeah, got it. So I'll leave the condolences here because ये जो है ना हमारी आगे एक्टिविटी का हिस्सा है, तो आप फर्दर वहाँ एक्सप्लेन ऑलरेडी हो जाएगा. I'll go with compelling. सही, so compelling means ताकतवर.
कि his words are very much compelling, उसके अल्फाज जो है ना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, भारी हैं. His words are very much compelling and convincing. कि क्या है कि उसके अल्फाज बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी हैं, भारी भी हैं, कि इंसान को कन्विंस कर लेते हैं, आमादा कर लेते हैं. सही. Another word I'll take is serene. When each and every single time I go to my village, I feel such a serene environment. कि जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा पुरसुकून माहौल महसूस होता है. सही. अच्छा, ingenious. His cleverness is totally ingenious, or his ideas for learning new things is totally ingenious. कि उसकी जो क्या है कि नई चीजें सीखने के लिए जो उसके आइडियाज होते हैं, जो सोचता है नई चीज सीखने के बारे में, आइडियाज, मेथडोलॉजी, जो मेथड्स वगैरह के बारे में सोचता है, वो बहुत ही ज्यादा इंजीनियस हैं, होशियार हैं. ठीक. अनदर वन, इंडेवर. तो इंडेवर क्या है कि कोशिश करना. Sir, we can start the activity. I think this will be enough. So you can take the one or two students, and they will ask somebody ask the question with the word, and he will reply with the same word. Okay. So we can choose. You can choose two students as per your choice. Okay. So first one is Arif Hussain. And kindly, each and every single time, I'll repeat again, each and every single time you are answering a question or you are asking a question, if you are taking part in any sort of activity, you will have to turn on your camera. Okay. And another one is Usman. Yes. So for both of you, I'll give you the word tenacious. Yes. Who is going to take the part with the question? First, should I make a sentence? Yes. Ask a question but use tenacious in your sentence. And Usman, you'll have to use the same word, or it's up to you. You can use another word as well, but from these words, from vocabulary. Okay? Carry on. Yes, Arif. Yes, Arif. Go on. Okay, sir. Usman, what about your tenacious health? My tenacious health is very well. Okay. Yes, Usman, you also use some other word. Like for example, you can say that right now after my treatment, I'm feeling so serene. Okay, so thank you very much for taking part in this activity. Another student I would like to take part is Binafsha Mohammadi and Iqbal. Yes, Iqbal sir. So to both of you, I am giving you the word resilient. Yes, resilient. And Binafsha Mohammadi, you will be asking the question, and Iqbal sir would be answering you. Which one, sir? Resilient. This one. Yes. Okay. This one. Resilient. Lachakdar. Oh, okay. Yeah. A resilient. How can I do it, sir? Okay. I'll give you a tip for that. क्या करें? First, think of the sentence in Urdu. Say, how are you going to use the word lachakdar in Urdu? Then simply translate that sentence into English. मैं आपको बताता हूँ बिनफ्शा, जैसे सर ने बताया आपको, आप रेजिलिएंट यूज करें अपने सेंटेंस में. आपने सवाल करना है, ठीक है. आप पहले अंडरस्टैंड करें लचकदार चीज क्या हो सकती है. रस्सी हो सकती है लचकदार चीज, ठीक है, क्या हो सकती है. तो आपने पूछना है कि ये रस्सी जो आपके हाथ में है, क्या इसमें लचक है या ये लचकदार है. अब आप इसको कोशिश करें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की और सिर्फ सवाल पूछें. Okay. Can I use chain? Yes, anything. Yes, anything. It's up to you. Okay. This chain is your hand. How much is it?
Am I right, sir? Could you repeat yourself again? I didn't get you. In your hand, this chain in your hand, how much is it? No, you'll have to use these words, the one I have given to you. Okay, these words, because you will have to use these words in our vocabulary, this vocabulary in our sentences, in our conversation. Yeah, you can use some other words of your choice. Okay. Yeah. I Yeah, can go do on, it, ma'am. sir. This is Okay, no, okay, no, we can Okay, take to okay. other person. With Okay, Iqbal, so yes, Miss Iqbal Mala sir, Basi. yes. Iqbal Iqbal and Mala. yeah. Yes, sir. Yeah. So, Mala Basi, you are supposed to ask a question from Iqbal Sahab, or I'll change it, switch the roles. Iqbal Sahab, ask any sort of question from Mala Basi, but use these words, one of these words in your vocabulary. And Mala, you will have to use these words in your sentence as well as an answer. Okay, sir. Yeah. So, Iqbal Sahab, yes, carry on. Yes, sir. What is the serene of Murray in Murray? What kind of serene in Murray? What the word you are using? What Serene. kind of serene in Murray? Iqbal sir, you can ask the question, sorry to interrupt you can ask the question like this. So, what kind of serene environment is there in Murray? Serene Murray, environment, yes. yeah. Okay. Yeah. Yes, There is Mala. there is a prolific environment, and is it okay, sir? Yeah, thank you very much. Okay. Two more people I would like to thank you very much, Iqbal sir, both of you. Thank you. Okay. Rahat and Faisal. Faisal. Yes, sir. Which one? Okay, go with the word ascend, the third word ascend, and ambiguous. Yes, these two words. Rahat, Ascent. yes, Rahat, you go with the word ascend, and I don't know whether Faisal is with us or not. We can take the Miss Mala Basi as well. Yes. Okay, Mala Basi. Mala, you can ask the question to use this sentence, and Rahat will answer the question and use these words. Okay. So Mala, you can ask the question. Okay, sir. Rahat, did you go for condolence of the death of my cousin? You can question me about the ascent, not consideration. Okay. It's up to her. It's okay. You can answer in ascend or you can answer in condolence for her. Yeah. Ascend. Okay, sir. I can ask the question about the ascend. Yeah. सर ये चढ़ना जो है वो माउंटेन वगैरह पे चढ़ना है क्योंकि मेरा थोड़ा नेटवर्क हो गया था मुझे इसकी समझ नहीं आई थी Okay. माउंटेन पे चढ़ना है या जस्ट मतलब एग्जैक्टली ये माउंटेन पे चढ़ना भी होता है ये जब एक बंदा he is going on in his life and he is becoming successful day by day, so that is also called ascent. See? Okay. Sir, can you tell me about your ascent journey of your life? Okay, Mala, sorry to interrupt both of you. Mala, you can ask this question like this. Can you tell me about your ascending journey in your life? Ascending. Oh, sorry, sir. Yeah. Can It's you please okay. tell me your ascending journey of your life? My ascending or in my life, I can read many books and learning new things. Okay. Good. Good. So thank you very much for both of you. I think you have got the idea of how you are supposed to use these words of vocabulary in your conversation. Excuse me, sir. Yeah. Can you, sir, please repeat these all words for me because my network issue also I cannot. Okay, good. Okay, so I'll repeat in Urdu.
तो कॉन्डोलेंस मीन्स के ताज़ियत करना। जब कोई मर जाता है, फौत हो जाता है, तो हम जब उस बंदे का पूछने जाते हैं एंड वी शो एम्पैथीज एंड सिंपैथीज टुवर्ड्स दैट पर्सन, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्डोलेंस कहते हैं। सही। एंडेवर, कोशिश करना, मेहनत करना, सही है, स्ट्रगल करना। इसको जीजी असेंड, जस्ट बोथ ऑफ यू यूज दैट सेंटेंस राइट नाउ। तो इसको क्या कहते हैं? असेंड मतलब चढ़ाई करना, पहाड़ पर चढ़ाई करना, सीढ़ियों पर, या एक बंदा जब आगे जाता है जिंदगी में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड असेंड। रिजिलियंट, लचकदार। सही, कि कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, इट कैन बी अ ब्रांच ऑफ अ ट्री और इट कैन बी अ पर्सन, कि ऐसा बंदा है जिस पे बहुत मुश्किल हालात आ रहे हो लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल कर रहा हो, उनसे होकर गुजर रहा हो। सही, वो हिम्मत ना हार रहा हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजिलियंट। कंपेलिंग क्या होता है? ताकतवर होता है। सही, ऐसी चीज जिसका असर बहुत ही ज्यादा होता है किसी भी इंसान पर। कोई आइडिया हो सकता है कंपेलिंग, दूसरा एक इंसान भी हो सकता है। सही है, कंपेलिंग कोई ऐसी बुक हो सकती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। सही, ताकतवर किताब, दैट कन्विंसेस यू, दैट चेंजेस योर मेंटालिटी। इंजीनियस मतलब होशियार। इंजीनियस के सेम ही मीनिंग है। सीरीन, पुरसकून, कोई भी जो माहौल होता है पुरसकून होता है। टेनेशियस, मजबूत। सही है, जिस तरह हम स्ट्रॉन्ग को यूज करते हैं उसी तरह हम टेनेशियस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोलिफिक, अनमोल, जिस तरह वर्ड यूनिक को यूज करते हैं वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड प्रोलिफिक। एंड एम्बिग्यूअस, मुबहम। मुबहम का मतलब कि कोई ऐसा लफ्ज हो, कोई ऐसी चीज हो जिसके बहुत ही ज्यादा मानी निकलते हो, एक से ज्यादा मानी निकलते हो एट द सेम टाइम। सही, तो ये क्या है? these are some of the words you can use in your daily life conversation because natives use these words. सही, okay, let's move on to the next slide. Phrases. Okay, yeah, let's go on. Go on with phrases. So ये क्या है? All of these phrases I have picked up very I'd say efficiently क्योंकि natives use these phrases. So yeah, first let me tell you the meaning of these phrases and किस तरह हम उनको इस्तेमाल करते हैं. So the first one is okay. These are the phrases. The one I've underlined in and I've turned out in bold. तो जो bold में लिखे हैं मैंने और underline किए हैं, these are the phrases. Out of the blue, once in a blue moon, brace yourself. Out of thin, sorry, this one is out of thin air, not think air. सही, thin पत्ते को जो कहते हैं. Busy as a bee, bite more than you can chew, or bite more than one can chew. Bite the dust. This is basically the second form. यहाँ मैंने second form used किया, but the original sentence or phrase is to bite the dust. Golden age, dice with death and spill the beans. So the first sentence is out of the blue. इसका मतलब क्या है कि अचानक, whenever something happens, जब भी कुछ अचानक होता है, we call this in English out of the blue. जिस तरह हम कहते हैं ना कि suddenly or immediately, we can also use the phrase out of the blue. For example, the police came out of the blue for the thief. एक चोर के लिए पुलिस अचानक से निकल आई. Second one is in family functions. Once in a blue moon. तो once in a blue moon देखिए, and all of these idioms and phrases ये क्या है? इनके पीछे भी एक लॉजिक होती है कि क्यों इनको इसी तरह ही बोला जाता है. नाउ ब्लू मून क्या है? हमारे पास मुख्तलिफ चांद तो वही होता है बट कलर भी इसके अकॉर्डिंग टू इवेंट्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स कलर. वी हैव ग्रीन मून, वी हैव रेड मून आल्सो कॉल्ड ब्लड मून, एंड देन वी हैव ब्लू मून. और ब्लू मून क्या होता है? वो काफी सालों बाद आता है. सही, वो हर साल नहीं आता, वो 5-6 साल बाद, 15-20 साल बाद भी आ सकता है. So that is why we use the term once in a blue moon. जिसका मतलब क्या है कि कभी कभी, anything that happens very rarely we call it once in a blue moon. In family functions she only appears once in a blue moon. कि family function में क्या है? वो कभी कभी निकल आती है, कभी कभी family functions में हिस्सा लेती है. और third one is brace yourself, या to brace oneself. अपने आप को संभालना या अपने आप को पहले से क्या कर देना? एक्टिव कर देना, अवेयर कर देना. ब्रेस योरसेल्फ फॉर द कमिंग एग्जाम्स. ये जो आने वाले एग्जाम्स हैं इनके लिए क्या करो? खुद को संभाल लो, खुद को रेडी कर लो, मेंटली एक्टिव कर लो. सही है. You cannot make money out of thin air. Okay, so the fourth one is out of thin air. सही, हवा में. We use this phrase in Urdu as well कि जो है ना, तुम हवा में पैसा नहीं बना सकते. सही, you cannot make money out of thin air. कि जब तुम you're not working, you're not struggling and you want to make money out of thin air. कि तुम कोई मेहनत नहीं कर रहे और तुम कोशिश करो कि हवा में पैसा बनाना शुरू करो. फिर the fifth one is busy as a bee. बहुत ही ज्यादा मसरूफ. जब कोई होता है ना, कहता है कि I'm very busy. You can also use this word, this phrase, the busy as a bee. कि I am busy as a bee on Monday. And truth be told, I myself am busy as a bee on Monday.
क्योंकि क्या होता है कि मंडे का दिन सबका इस तरह होता है, देयर आर लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो हर कोई इज बिजी एज अ वीक, बहुत ही ज्यादा मसरूफ होता है। अदर वन इज डू नॉट बाई टू बाइट मोर देन वन कैन च्यू, मतलब कि सलाहियत से ज्यादा काम करना। If you are having more, you are deliberately taking more workload on yourself that you cannot complete, that is called biting more than one can chew। मतलब कि आपके पास एक देखिए, हर एक इंसान की एक लिमिट होती है ना काम करने की, लेकिन जब आप लिमिट से ज्यादा ही खुद पर काम ले रहे होते हैं, बोझ डालते हैं, तो उसे कहते हैं टू बाइट मोर देन वन कैन च्यू। डू नॉट बाइट मोर देन यू कैन च्यू, कि खुद पर कभी भी अपनी सलाहियत से ज्यादा काम ना डालो, बोझ ना डालो। ओके, टू बाइट द डस्ट, नाकाम हो जाना, सही। इसके दो मीनिंग निकलते हैं टू बाइट द डस्ट। द फर्स्ट वन इज टू बिकम अनसक्सेसफुल, नाकाम हो जाना, हार मान लेना, सही। एंड द अदर वन इज मतलब टू फेल, एंड द अदर वन इज टू डाई, कि मतलब मर जाना, सही। सो शी ट्राइड हर बेस्ट बट बाइट द डस्ट इन द फाइनल एग्जाम। नाउ देखो, जिस तरह मैंने कहा ना कि एम्बिग्यूअस के बारे में बताया ना मैंने, phrases की भी ambiguous meaning, it may or may not have ambiguous meaning depending upon the context, सही। तो कॉन्टेक्स्ट को आप देखेंगे, यू हैव टू रीड द सेंटेंस। अब जाहिर सी बात है, अगर फाइनल एग्जाम की बात हो रही है तो यहाँ मरने की बात तो नहीं होगी ना, कि फाइनल एग्जाम में क्या है, मेहनत करी थी बट मर गई, मतलब टोटली सेंसलेस बनता है ना सेंटेंस। बट यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट, कि इसके मीनिंग अब ये है कि उसने अपनी बहुत ज्यादा कोशिश की बट शी बिट द डस्ट इन फाइनल एग्जाम, लेकिन फाइनल एग्जाम जो थे उनमें नाकाम हो गई। ओके, थ्री मोर आर गोल्डन एज, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सुनहरी दौर उर्दू में भी। So Europe was in the golden age during Renaissance. Now let me give you a bit of idea about this word. Sorry. Okay. This word here, Renaissance. Now what is Renaissance? Renaissance क्या है कि it was the time of 15th to 16th century, कि जिसमें यूरोप क्या था, तरक्की कर रहा था हर एक चीज में, whether it was philosophy, it was science, it was religion, it was literature, तो हर एक चीज में तरक्की कर रहा था, उस दौर को रेनेसां कहते हैं। मतलब कोई भी दौर में जब कोई एक खास मुल्क हो या कौम हो, it keeps on being becoming successful day in day out, that is called Renaissance, that time is called Renaissance। तो क्या है कि यूरोप क्या था, अपने रेनेसां के दौर में, गोल्डन एज में था, सुनहरी दौर में, कि वो तरक्की पे तरक्की किए जा रहा था। सेकेंड लास्ट वन इज टू डाइस विद डेथ, मतलब कि मौत के साथ खेलना। तो मौत से खेलना, ही डाइसेस विद डेथ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, जब बिजनेस की बात आती है तो वो मौत से खेलता है, मतलब कि वो बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लेता है। ओके, टू स्पिल द बीन्स, मतलब रास फाश कर देना, सच उगल देना। दे स्पेल्ड द बीन्स अबाउट ब्रेकिंग द डिनर सेट, तो डिनर सेट तोड़ने के हवाले से उन्होंने रास फाश कर दिया, मतलब कि वो नहीं बताना चाहते थे लेकिन आखिर में उन्होंने सच उगल दिया, सही। So I hope you got the idea of what these phrases mean. Now I want you to take part in making sentences other than these and use these phrases, these underlined and bolded phrases in your own sentences. We will do the same activity as done previously, the question and answer activity. Okay. Or you can also use advice. You can also take suggestions. See, so I have told you before, and I'll tell you again. Okay, you will have to use all the previous lectures in your current or future lectures. See, इसी तरह ही आपकी learning होगी कि जितना हमने पिछला सीखा है, you will have to make you the best use of it in your conversation. Okay, so for this activity, I'll be going with Riaz Ahmed, yes, and Rahat Afridi. Okay, so the last sentence, Arif Hussain, yes, last sentence, आपको write it down for you. सर इसको क्या करना है सर, सेंटेंस बनाने या? You'll have to make sentence बनाने हैं, but in a conversation। ये जो दूसरा बंदा है, आपने बात करनी है। So आप लोग को मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, सॉरी फ्रेज दे रहा हूँ, busy as a bee, सेंटेंस नहीं फ्रेज यूज करने हैं आपने in your own conversation। Busy as a bee, sir. Yeah. Sentence बनाए sir? Yeah, go on. Yes, जी sir, nowadays we are busier as a bee. Yes, so hello. Yes, Rahat, Yes. you can Sir, also nowadays. Yeah. Sir, nowadays we are busy a bee. Then we can't
take a time our home Okay. and family. but Yep. देखें, Yep. yeah. So sorry to interrupt you. Yep. देखें आप लोगों ने ये एक्टिविटी इस तरह करनी है राहत एंड रियाज के एक बंदा लेट्स से कि राहत है सॉरी रियाज है वो क्या करेगा एक सेंटेंस बोलेगा कि आई एम बिजी एज अ बी सो आई कैन नॉट कम टू द पार्टी और कम टू द गैदरिंग राहत आपने उसी सेंटेंस के हवाले से उसको एक और जवाब दे देना है सही है तो इस तरह आप लोगों ने यू हैव टू Okay. टेक अ कन्वर्सेशन यस Dear Rahat, I'm busy as a bee. I can't reach your party and I can't reach your walima. Okay. Okay, I'm also busy in Ramadan days because there is short day because there is off our office is 3 o'clock. Then we can come to after from home. So all day is busy is away for me. Yes, I can realize your personal matter because Ramzan al Mubarak is a best month and a Islamic month for us. Okay, So thank you very much. please don't mind. Okay, thank you very much, both of you. Thank you very much. Okay, you can also use just multiple phrases at once, both in questions and in answers. So for the next part, I'll be taking yes. Okay, Benafsha Mohammadi and Osman. Yes. So kindly, you can use any of these phrases the way you like. You have all of the phrases right in front of you, right? Yes, Benafsha. Okay, Benafsha, you will have to ask a question, and Osman will answer you that question. But you must use these phrases. Okay, sir. Are there your company in this year is gold age egg? Am I right, sir? Could you say it again? Are you yeah, go on. Okay. Your company are they your company in this year's is gold age egg? Yeah. Good. I got your idea. You can, Benafsha, you can also use a sentence with that. Is your company, you can say that I have heard that your company is going through the golden age. What's the specialty about it? Okay, sir. Yeah. So, yes, Osman. That's a bit more than you can chew. No, you have to use it in your own sentence, and you have to reply to Benafsha Mohammadi. सवाल अगेन बता सकते हैं इस तरह देखिए करना इस तरह है कि अब बिनफ्शा मोहम्मदी ने आपसे ये सवाल पूछा ना कि योर कंपनी इज गोइंग थ्रू द गोल्डन एज कि आपकी जो कंपनी है वो सुनहरी दौर से गुजर रही है व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट इट इसके बारे में क्या राज है तो अभी आपने उसी के अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू आंसर एंड यूज दीज फ्रेजेस सही है जितने फ्रेजेस आपके सामने लिखे हैं ना इनमें से कोई एक या दो फ्रेजेस पिक करके आंसर करें इसको सही my company dies with that that's sorry. Yes, Usman, could you say it again? I didn't hear you. My company dies with that. That's the reason of my company in golden age. So why is it going in golden age? Yes, she asked the question. My company dies with death. That's why my company golden age. You can also use some other phrases. Okay, thank you for the effort, but you you can also use other phrases as well.
So I'm taking 2 more people, and then we'll be moving forward. Rahat Afridi and Iqbal Sahab. Yes, Iqbal Sahab, okay. Yes. You will Yes. have to Yes. ask the questions. Use these phrases to ask the question. And yes, Riaz, you will have to. Sorry, Rahat, you will have to answer. Okay, sir. Thank you. Yes, Iqbal Sahab. There you go. Hello, Rahis sir. Yes, sir. Why are you so busy? I think that you are busy as a bee nowadays. Because there is no time for sleeping and no time for working, because when we wake up to office and 3 o'clock or office is off, then we come to home, and we can do aftari, then we go to Tarawih, and there is 2 hour Tarawih, the English class. So I think those days is very busy is Abi for me. Okay, good. Okay, thank you very much, both of you. You can also use the dices with that, or you can also say, Riaz, you could also use, sorry, Rahat, you could also use that. Actually, I think I am biting more than I can chew. सही? आप ये भी कह सकते हो, उन्होंने पूछा ना कि you are busy as अभी आप तो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं असल में सलाहियत से, मुझे लगता है कि सलाहियत से ज्यादा मैं काम कर रहा हूँ. That is why I am busy. Okay, thank you very much. I hope you got the general idea of how to use these phrases, and these are really native phrases. सही? So आप लोग के साथ ये शेयर भी की गई है फाइल. Learn these phrases and try to use these phrases and words. Okay. Now coming towards the lecture, demonstrative pronouns. So demonstrative pronouns are those pronouns that point out towards something. Say in spoken or written English, demonstrative are generally used to point out at something in a situation. So we have 4 demonstrative pronouns. So here the first one is this, and that, these, and those. These are the 4 demonstrative pronouns. ये किस चीज के लिए यूज करते हैं? In order to point something. For example, I have this marker right here with me, so I'll say this is a marker. सही है? तो हम this को, अच्छा, I'll be telling also you the reason why we use this and that, these and those. हर एक अपना जो है ना फंक्शन होता है, फंक्शनलिटी होती है. The demonstrative pronouns this and these are usually refer to something which is near to the speaker. So this and these हम क्यों यूज करते हैं? In order to refer something that is closer to us. सही, जो चीज करीब हो हमारे. And we use that and those to refer to something further away. कि जो चीज हमसे दूर हो उसके लिए हम we use that and those. Now, for example, you can see the boy here pointing towards a bus closer to him. He is saying this is a bus. And can I use with singular noun? और ये हमेशा, अच्छा, this क्या है? हमेशा आप singular noun के साथ यूज करेंगे. Now you can see the bus, that there is only one bus. That is why the boy is using this is a bus. See, he is using the pronoun this. I can say this is a pen, or I can say this is a phone. I can say this is a cup, because this is one, right? And this is closer to me. That is why I can say this is a cup, and this is a marker, or this is a duster. Okay, so we can take different examples. And as for these, it is used with plural pronouns. See, जब भी we have more objects around us, but they are closer to us. That is when we use the pronoun these. तो हम इस these का कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारी चीजें करीब हो पर वो ज्यादा हो मिकदार में. Now I can say that these are markers and these are marker and phone. See, पहले this is a marker and these are marker and phone. क्या है? मिकदार में एक से ज्यादा हो गई है ना. That is why I am using the pronoun these. See? So these are some of the examples. This is a car, this is an elephant, this is a classroom. So you can see here कि हमारे पास क्या है? Singular noun है. And remember from our last activity, articles, हम यहाँ article भी इस्तेमाल कर रहे हैं. This is हमारे पास हो गया है helping verb. हमारे पास हो गया article. We use article A when we are talking about consonant, and we use article N when we are talking about vowel. Okay, this is a car,
This is an elephant. Elephant starts with the sound That is why we are using vowel. And this is a classroom. See? So coming to these are cars. अब देखिए उसमें क्या है, नाउन प्लूरल हो गए ना, cars, elephants and classrooms. So इसी वजह से दो बातें. First, we are using these. Second, we are using are. And the third one is कि we are not using any sort of article. यहाँ पर हम article का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं. सही? So और आर्टिकल में ही हम दी का इस्तेमाल प्लूरल में कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ए एंड एन, उनका इस्तेमाल हम फिर जो है ना दीज के बाद नहीं कर सकते, बिकॉज हम मल्टीपल चीजों की बात कर रहे होते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल थिंग. सो दीज आर कार्स, दीज आर एलिफेंट, दीज आर क्लासरूम्स, दीज आर माय बिलोंगिंग्स. सही. ओके, नाउ आई वांट some two students again for this activity. Now, could you use one of the students will have to use this and the other one will have to use these, but in a conversation mode, okay? So, Mala Abasi and yes, Arif. Mala, you'll have to use, yes, Mala, you'll have to use the word this, the pronoun this, while Arif, you'll have to use the pronoun these. You can, okay, yeah, you can ask a question or you can answer them as well. Yes, yes, Mala. Okay, is this a book? Sir, what should I do? अच्छा, क्या करना है Mala? You will have to ask a question. सही है, try asking a question. You can ask that what is this thing I'm holding in my hand, or you can generally ask a question. इसके लिए देखिए, इसके लिए okay, ये एक्टिविटी और भी बेहतर हो सकती थी या हो सकती है. If you turn on your camera, for example, I've turned on my camera, I can ask you, what is this thing I'm holding in my hand? सही. So क्या है कि फिर वो क्या बोलेगा ये कि this is a Arif, if Arif is answering me, he would say that this is a pen or this is a marker. सही. Yes, go on. Yes, Mala, go on. Okay, sir. What are these things on my hand? It's not working. Have you turned on your camera? Yes. From there. Okay, I cannot see you here. Arif, also, you also turn on your camera, Arif. Sir, Arif, okay. ask the question. It's not turning on the camera. Sir, इधर तो लिखा है you can't start your video because the host has. Yes, start your camera. Start your Valid. camera. You can carry on. Yes, Arif and Mala, you can start your camera. Okay, now turn on the camera. Yeah. Yes, sir. Now it's working. Good. Yeah, it's working. Yes, Mala, kindly turn on your camera and ask the questions. Okay. Okay. Arif, can you look Yes, I at can this? see. What is this? That's a box. Okay. So that is a book. Good, great. So you have actually, Arif ने वो आंसर दे दिया जो अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ. So yeah, that using that. So thank you very much, both of you, for taking part in this activity. Thank you, sir. I'll be choosing. Yeah, I'll be choosing 2 more people. Yes. Let's go with Usman and Faisal. Can you hear me? Yes. Faisal, please, Faisal, open your mic and camera. Faisal, if there's any issue, you can use the chat box in order to answer us. See? आपका कोई भी इशू है फैसल, आप जो है ना चैट बॉक्स में आंसर कर दें. सही है, क्योंकि आपको रिसेंटली और दोस्त प्रीवियस 2 क्लासेस में आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूं, बट अब तक मुझे जो है ना किसी किस्म का रिस्पांस आपसे नहीं मिला. ओके. You can take, sir, Iqbal sir. Yeah, Iqbal sir is also thinking of him. Yes, Iqbal sir. Kindly carry on the conversation. Yes, sir. Yes, sir. With whom? With Usman. Yes, Usman, kindly turn on your camera. Yes, Usman is there. He's already opened the camera. Okay, sir. See.
Okay, great. I could not see. Thank you very much, Usman. Okay, Iqbal sir, kindly use these the pronoun these in your conversation. Okay. Mhm. What are these things appearing on the camera? You can Iqbal sir, in order to use these, you will have to use hold on to multiple things because we are taking Okay. about Okay. yeah, just like that. Thank you very much. My turn. Yes, Usman. Yeah, Usman, say instead of just using one word, try to use the word these and say it in a whole sentence. This is airport appearing on camera. Yeah, I could not quite much get you, Usman. These are pencil and glosses. Yeah, those are pencil and glasses. Yeah. Okay. However, thank you very much, both of you, for taking part in this activity. So I'll be moving on to the next slide. Yes. Okay, we are given examples of negative and positive, negative and interrogative. While using negative, we will have to use this plus helping word plus not, and then noun along along with article. See, for example, this क्या हो जाएगा? This के बाद helping word इसका आ जाएगा या was का if you are talking about the past. और क्या उसके बाद आ जाएगा नाउन, लेकिन नाउन के साथ सिंगुलर, क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस तो उसके साथ क्या होगा? आर्टिकल ए या एन का लगा होगा. दिस इजंट माय बुक, दिस इजंट एन अम्ब्रेला, दिस इजंट टॉय. सही. सो क्या है कि और इसी तरह सेम विल गो फॉर दीज. These aren't my books, these aren't my umbrellas, these aren't my toys. सही. As for the interrogative, हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में? अच्छा, उसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर आते हैं. सही. तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर को एंड नेगेटिव दीज आर सिंपल, बट यूजिंग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. इतना मुश्किल नहीं है, बट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. तो क्या है कि इज दिस अ फोन, इज दिस, उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वी यूज द हेल्पिंग वर्ब इज हो गया है, आर हो गया है, उसको इस्तेमाल करते हैं, या वाज वर्ड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, माजी के बारे में बात करते हैं तो वाज एंड वर्ड. उसके साथ क्या होता है? फिर हम आर्टिकल ये हम प्रोनाउन दिस का यूज करते हैं. उसके बाद नाउन यूज करते हैं. नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एंड एन और आखिर में नाउन एंड देन क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, इज दिस अ फोन, इज दिस एन एग, इज दिस अ हाउस. एंड सेम वुड गो फॉर आर दीज phones, are these eggs, are these houses. So ये सेम रूल है, बट क्या है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल, तो दीज यूज करेंगे और दीज से पहले होगा जी हेल्पिंग वर्ब आर का. सही. So for this activity, I'll be taking two participants. Yes, Benafsha and Mala Abasi. जी सर. Yes, तो आप लोगों ने क्या करना है? Same as the previous one, same as the previous one, but this time you will have to, first one will have to ask answer, question. सही है, question पूछ लेना है. पहले भी आप लोगों ने question ही पूछे हैं, पर इस बार क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तरह एक मार्कर पकड़ता हूँ. इज दिस अ मार्कर? इफ इट इज अ मार्कर, तो दूसरे बंदे ने क्या है आंसर करना है? यस, दिस इज अ मार्कर. सही. लेकिन अगर मैं इस तरह मार्कर होल्ड करता हूँ, इज दिस अ कप ऑफ टी, देन दूसरे बंदे ने क्या कहना है कि दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी. और कोशिश ये करनी है आप लोगों ने, बिकॉज वी आर ऑल्सो यूजिंग नेगेटिव, सो क्वेश्चन गलत पूछे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मार्कर, सबको पता है कि मार्कर है, बट मैं क्वेश्चन क्या करूंगा कि इज दिस अ कप ऑफ टी. इसी तरह करूंगा ताकि मुझे रिस्पॉन्स भी किस में मिले? नेगेटिव में मिले. ओके. So yes, Mala, you asked the question, and Benafshi, you answered that question. Okay. Balsha, is this register? No. Is no is no is it not? But this is a book. Okay, good. This is a book. So thank you for using this structure, both of you. चलें, I won't be taking much time on this one because next जो है ना these और those की activity आ रही है, तो उसमें भी सब हो, उसमें I'm gonna take participants. So okay, this here is, now that is a bus. सही.
अब ये देख रहे हैं, you can see here that our character is standing over here while the bus is standing way over there. कि करीब है ये कैरेक्टर हमारे, बट वो जो बस है इस कैरेक्टर से बहुत दूर है. That is why she is using that as a pronoun. So that हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? When we are talking about something that is far away. I'll give you an example. So first, let me just, I hope you can see me. Okay, yeah. Sorry, I'll be showing you a bit of my room to you, all of you. Okay, so now, okay, yeah. Can you see it? What is that? I hope you can see it. Sorry for the angle. So I would say कि that is my coat. सही? क्योंकि क्या है, कोट मुझसे दूर है ना, so I would be saying कि that is my coat. सही? और मैं कोट की बात कर रहा हूँ एक, हालांकि उसके साथ बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल थिंग, मैं बोलूंगा कि दैट इज माई कोट. लेकिन उसके साथ और भी जैकेट्स वगैरह लगी हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? दोस आर माई क्लोथ्स. सही? नॉट, आई एम नॉट यूजिंग दीज, आई एम यूजिंग दोस. क्यों? क्योंकि मैं मल्टीपल चीजों की बात कर रहा हूँ ना. आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन थिंग. सही? तो वी, आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ व्हेन टू यूज दैट एंड व्हेन टू यूज दोस. So I'll give you an example here now, slide. Okay. Now you can see that the same girl is pointing towards the buses and she's saying that those are buses. See? Because there is not one bus, there are three buses. मतलब कि जब भी एक से ज्यादा चीज हो, so we'll be using the pronoun those. सही? For example, okay, that की example क्या है? That is a bus, that is an airplane, that is a kite. Same grammatical rules, but we'll have to use that. Okay, those की example भी वैसी है कि those are nouns, sorry, those are birds, those are airplanes, those are kites. इसी के साथ negative और positive, sorry, interrogative को सीखिए हम क्या करते हैं, then we'll do our activity. Okay, for the negative ones, we'll be using the same structure. That is not a bird, that isn't a bird, or that is not a bird. And for those are not birds, those aren't birds. ओके, जब इंट्रोगेटिव की बात आती है कि हम वही स्ट्रक्चर यूज करते हैं दैट के लिए, इज लगाते हैं या फिर वॉज लगाते हैं. इज दैट अ शॉप, इज दैट अ बस, सॉरी अबाउट दिस. ओके, इज दैट अ बस, इज दैट अ शॉप. देन उसके बाद क्या होता है कि हम जब प्लूरल की बात करते हैं, आर दोज शॉप्स, आर दोज अपार्टमेंट्स, आर दोज बसेस, इसकी बजाय हम लगाते हैं वर्ब आर का. सही? सो नाउ आई वांट टू पार्टिसिपेंट्स इन अ रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन. सही है? तो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन हमने करनी है उसमें, एंड यू विल हैव टू यूज all of these four pronouns. So yeah, you will have to use this, you will have to use that, you will have to use these, and you will have to use those. I'll be taking two people for this. Riaz Ahmed and Rahat Afeez. Yes. And kindly turn on your cameras, both of you. Okay. Conversation क्या है? I'll give you a context कि आप लोग क्या आए हैं, लेट्स से कि आप लोग आए हैं एक इंटरव्यू में ही. सही है? वन विल बी द इंटरव्यूअर एंड द अदर विल बी द इंटरव्यूई. लेकिन आप लोगों ने, यू डोंट हैव टू आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन. क्वेश्चंस आप लोगों ने इस तरह करने हैं कि जिसमें क्या आप सॉरी, आप लोग क्वेश्चन में भी यू हैव टू यूज the four pronouns, four demonstrative pronouns, and even in the answer you have to use four demonstrative pronouns. Okay, carry on, kindly. सर दिस इज अ लाइट, मतलब ऐसे क्वेश्चन करने या ओके, इसमें जी रियाज, आप लोगों ने क्या करना है रियाज, यू विल हैव टू आस्क द क्वेश्चंस एंड यस राहत, यू विल हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सही है रियाज? यू आर द इंटरव्यूअर एंड राहत, you are the interviewee. Yes, and dear Rahat, this is a light, you know. सर मैं कैसे जवाब दूं? Just kindly turn on the camera, both of you. Sir, there is issue in network. If I can turn my camera, then there is Okay. network problem. सर कैमरा ऑन कहाँ पर होगा सर? ओके, आप लोगों को, यू मस्ट बी हैविंग एन ऑप्शन, आप लोगों के पास यहाँ ऑप्शन वीडियो कैमरे का बना होगा, देख लेंगे. आई डोंट नो इफ यू आर यूजिंग कंप्यूटर और सेल फोन. कहाँ पर सर? यहाँ पर तो नहीं है सर. ये रिकॉर्डिंग है, शेयर है, कैप्शन है. नो वहाँ पर ये वीडियो का वो भी बना हुआ है. इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, आई डोंट नो.
but यहाँ पर एक वीडियो कैमरा होते you will have to click that. Okay, चलिए, it's okay, but carry on the conversation because we are short on time. Yes, sir. Yeah. Ji Rahat, this is a. Please tell me. This is a light. Yeah, we can use that light for the light can give us like what I say dead light we can the light can watch our room lightly. Okay. Yeah, go on. Okay, one more thing I would like to add is कि आप लोग जो है ना वो proverbs sorry or phrases and words, you can also use those phrases and words, right? And see, again, I use the word those. Why did I use the word those when I was talking about phrases and words? Can anyone answer me? Riaz or Rahat? Yes, sir. Those is used far away, sir. Yeah. And plural, those is used far away. एग्जैक्टली क्योंकि है अब Plural, यहाँ पर sir. क्या है जी एग्जैक्टली बट यहाँ लॉजिक क्या है कि वो ऑलरेडी माजी की बात नहीं कर रहा था ना गुजर चुका है ना वो दैट इज व्हाई आई वाज यूजिंग द वर्ड दोस phrases and those words. Okay, thank you very much. Yes, carry on. Sir, those are cars. Now you'll have to talk with each other and then I'll be selecting two more people. Ji Rahat, do you know those are cars? Sir, can I tell him some words sentence from those? Yeah, the conversation is open. Okay, Riaz, in 2009 in our area those are many tourists and I'm right, sir? Yeah, go on. And this time there is no stress, there is peace, alhamdulillah. Okay, thank you very much. I'll be selecting two more people. Thank you very much, both of you. Yes, let's go on with Iqbal Saab and Mala Abbasi. Yes. Riyaz, sir, Yes, please sir. ask the question. Yes, Iqbal Saab. Start with the question using this, that, these, or those. Okay. Those. Mala, what were those things which disturbed you during the Ramzan? The first one is wake up for sari and preparing sari for others. And the second thing is for morning when I go for a job. Okay. These things disturb me. Okay. You can Iqbal Saab, you can also ask or Mala, you can also ask questions regarding this, that, these, or those. Yes, Mala, go on. Okay. Which things you like in Eid? This and those के बारे में पूछना था. Those. Which things? Well, you can Mala, you can ask this question like this: that which are those things that you like in Eid? Okay. Which are those things which you like in Eid? On Eid. Okay. Yes, on Eid I like to wear new clothes and offer Eid prayer, and then to meet my friends and all kith and kins, and then enjoy the delicious dishes made by
my wife at home. Okay, great. Great. Okay, thank you very much, both of you. I think we should be moving on ahead for our context right now. Okay, so now comes the context. We have the context of shopping. But before starting that, let's read for some, shopping is an art, for other it's a sport. So I think all of you do know the difference between an art and a sport. See? So what is shopping for you? Is it an art or is it a sport? A general question. You can raise your hand to answer this question. Yes. If you didn't get the question, I can explain it further for you. For some, shopping is an art. For others, it's a sports. इसमें आप लेक्चर देंगे ना सर? देखिए इस तरह करने कि शॉपिंग है, वी आर गिवन जनरल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन. इसमें क्या है, पूछा गया है कि शॉपिंग जो है ना कुछ लोगों के लिए आर्ट होती है ना. व्हाट इज आर्ट? कि वो आप बहुत ही ज्यादा दिल से कर रहे होते हैं. सही. इसकी जनरल मिसाल में जितनी जनरल मैंने देखी है वो मिसाल क्या है, लेडीज हो गई. फॉर देम शॉपिंग इज एन आर्ट, क्योंकि वो बड़े मजे से जो है ना चली जाती है, शॉपिंग करती हैं. लिटरली दे टेक देयर 4 to 5 hours ऑफ द डे. सही, क्योंकि कभी कभी जाना ही उनका होता है. सही. एंड फॉर अस मैन आई वुड से इट्स अ स्पोर्ट. हम कंपटीशन में होते हैं. We just have to make it as quick as possible. सही है. तो मर्दों के लिए जितना मैंने देखा, it's a sort of sport कि जल्दी जल्दी बस सामान खरीदो and bring it back all to home. सही. So what is this for you? Is it an art or a sport? Yes, Usman, you can tell us in the conversation. Yeah, let me just unmute you. So we'll wait for a minute. Sir, yes. It's an art. Okay, it's an art. Good. Sir, it's art for me. Okay, it's an art. Oh, yes, but I think it highly depends. Okay, someone else would like to answer. Then I'll explain it a bit. Iqbal sir. Okay. Yes, Iqbal sir. Yes, sir. Shopping is art because you have to argue and bargain with the shopkeeper properly. If you have not art, if you don't aware of this art, you always pay more and buy. You can say things at high prices. Yeah, exactly. That is also a good answer. But I think it highly depends upon the context. If you're in the context of making it back to home as quick as possible, या फिर आप लोग को अगर जेब इजाजत नहीं देती उतना, then it becomes a sport for you. सही. But yes. क्या है कि exactly. But if you have a lot of money and a lot of time, then it becomes an art. फिर आप घर के लिए चीजें खरीदते हैं, आप अपने लिए चीजें खरीदते हैं, आपको जो दिल चाहते हैं. सही. So I think it highly depends upon the context. Okay, let's carry on. Okay, we have some words regarding shopping. सही है. ये words आप लोग को इनके मैं कुछ I'll explain it to you. Then we have phrases, and then we'll be using these in our conversation. Okay, so changing rooms and fit on rooms. What is this? ये जो है ना, ये हम उस रूम को कहते हैं चेंजिंग रूम, जो उसमें होता है, ये जहां पर हम क्या करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं in order to check those clothes. सही. Now we have sizes. We have extra small XS size, we have S size, that stands for small, we have medium M size, we have large L, we have extra large SL. See. So okay, Riaz, could you kindly mute off your mic? I'll mute it for you because I'm having a bit of disturbance in the from your background noise. Okay, then we have measurements. तो क्या है कि measurements होती है कि used with specific measurement for trousers, shoes. के we have measurement for every type of shirt, every type of trousers or pants or jeans. So in a shop we also have shop assistant that always go with us and stands with us side by side. तो जो हमारी हर एक चीज में help out हमें करता है या करती है. Right? We have trousers, pants and jeans, waist, credit cards. So these are some of the words regarding to shopping, to the context of shopping. अब if you remember कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब हम किसी खास कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करते हैं, we are using certain words regarding that context. So ये क्या है? Now these are the words that regarding to the context of shopping. Shopping के हवाले से ये सारे words हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं.
और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं शॉपिंग के हवाले से। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड हो गया, पैसे हो गए हैं, सही है, कलर्स हो गए हैं, ब्रांड्स हो गए हैं, गुशी ब्रांड, अरमानी ब्रांड, जे डॉट ब्रांड्स। So these are all these brands are tied to the context of shopping. Okay, now phrases. So these phrases are important. कि आप क्या कर सकते हैं कि और द कस्टमर आस्क्स यू कुड और मे आई हेल्प यू। हमने अच्छा, ये हम कुड और मे क्यों यूज करते हैं? हम ये सजेशन के लिए यूज करते हैं, हम ये क्वेश्चन के लिए, पोलाइट क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, सही। हाउ डज इट फिट? नाउ यू आस्क दिस क्वेश्चन कि लेट्स से कि यू आर गोइंग ऑन विद योर फ्रेंड, यू हैव ट्राइड ऑन सम न्यू शर्ट्स इन द फिटिंग रूम। सो उसमें क्या है कि देन यू आस्क योर फ्रेंड हाउ डज इट फिट, कि कैसी लग रही है। हम कहते हैं ना कि कपड़े कैसे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन हाउ डज इट फिट, यू मे से कि इट्स अ बिट लूज, और यू मे से इट फिट्स यू परफेक्टली, और यू मे आल्सो से दैट इट इज वे टू मच स्मॉलर इन यू, सही, कि बहुत ही ज्यादा आप में छोटी है और परफेक्टली फिट करती है। Okay, how would you like to pay? Okay, now when you have done your shopping and you are about to pay, तो आपसे क्या पूछता है ये शॉपकीपर के हाउ वुड यू लाइक टू पे, कि आप किस तरह पैसे दे, आप पैसे देना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू पे इन कैश, वुड यू लाइक टू पे ऑनलाइन, और वुड यू लाइक टू पे, या वुड यू लाइक टू पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, सही। सो इस तरह जो है ना आपसे सवाल किए जा सकते हैं। फिर इसमें साइजेस आ जाते हैं। इसमें आई एम लुकिंग फॉर एक्सेल साइज शर्ट, कि मैं एक्सेल साइज को देख रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज, आई प्रेफर अ जीन्स ओवर स्कर्ट। ये भी सवाल पूछा जाता है कि ओके, ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या है, या यू कैन से कि आई प्रेफर जीन्स, कि मुझे जो है ना जीन्स पसंद है, आई प्रेफर जीन्स ओवर स्कर्ट, के स्कर्ट की निस्बत में जीन्स पसंद है, और आई प्रेफर कमीज शलवार ओवर माई जीन्स एंड शर्ट, सही। सो now going, I hope you got an idea of how you're supposed to ask this. See, so let's go to for a bit of activity finding the right size. See, so इसमें क्या है कि one of you, so पहले मैं explain कर देता हूँ कि what are you looking for? अब एक तरफ we have shopkeeper and on the other end we have a customer. See, so one of you can become a shopkeeper. You can use these phrases, but बेहतर ये है कि आप लोग जरा इन्हीं को देख के you get the main idea and use your own question, use your own phrases, सही, use your own vocabulary to ask the question. One of you will become a shopkeeper and another one of you will become customer. सही है, one of you can ask what are you looking for, or you can ask it in the same way like what do you want to buy, सही, or what sort of shirt would you like, or सही इसी तरह what size are you, or what size of shirt do you want, see what size do you take, same question. Do you want to try it on, or in the answers b customer is also answering I'm looking for a shirt, I'm looking for a tie, I'm looking for a belt. Okay, do you have this size? Okay, okay, इसमें customer b can also ask the question. So make this conversation as natural as possible. जब आप लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो माइंड में आप लोग के क्या होता है कि मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे अच्छी किस्म की शर्ट चाहिए, आई नीड अ ब्लू शर्ट और आई नीड अ ब्लैक जीन्स। तो इसी तरह की अपनी कॉन्वर्सेशन यू हैव टू कैरी ऑन विद द शॉपकीपर, सही है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ आई विल बी टेकिंग टू पीपल फॉर द कॉन्वर्सेशन। Okay, and kindly turn for this activity also turn on your cameras, Usman and Binafsha. Just kindly turn on your cameras. Okay, sir. Okay, so okay, that's a bit funny for me to ask, but which one of you would like to become a shopkeeper and which one of you would like to become a customer? Yeah, I'll leave it there. I'll leave that to you. Yes. So hurry up, decide, and start the conversation. I'm a customer. Okay, okay. So Binafsha is the customer, and Usman, you will be the shopkeeper. Okay, sir. Hello, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. What are you looking for? I'm looking for scarf. What's the size of scarf? You mean what the color of a scarf? Okay. What's the color of scarf you need? I like
I like white and pink color. Do you have it? Yes, I have it. You want to try it? I can try. Try Yes, you this. can try. Yes, yeah, you can try it. Okay, where's the fit room? Sorry. For a She, scarf. I need. she, she's Over there basically, yeah, she's asking about the fitting room. Yes. at the right corner. Okay, thank you. Okay. I Yeah, go on. I like the white one. Can I pay for it? Yes, you can pay. Uh, how would you like to pay? Money. I can pay. She means that she can pay it in cash. Okay. Okay. You can pay Okay. it. Yeah, okay. One general advice is that regarding this conversation, you can also bargain a little to make it even more, natural. Okay, thank you, both of you. Thank you very much. I'll be taking 2 more people for this activity. Okay. Yes, Arif and Iqbal sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, do you have shalwar kameez, sir? Yes, of course. What kind of shalwar kameez? In what stuff you like? I want in cotton, Okay, cotton. half white. Half white. By Golamand. Yes, sir. Okay. Yes, we have. You can choose from this one. Okay. Where is the What kind of color you changing like? room? Half white? Yes. Okay, that is great. Okay, that is available. You can pick from one of them. Okay. Where is the changing room? And go ahead on the left side. Okay, thanks. What's the price of that? It is 2,500. Oh, it's too expensive. No, because price hike is routine matter. Can you give me some discount? If you buy 2, then there will be 50%, 25% discount. I will. Oh, definitely, you can avail this chance. Okay, so one is half white and the other one is any shining dress. Okay, you can. I think that you like silky one. Yeah. Okay, you can choose. You can select one of them of your own choice. This one that I am wearing now. Okay, you can tell. Okay, thank you, sir. Then how would you like to pay? Either cash or credit card? Credit card. Okay, you can use this machine, and Okay, you I will also. send in your account. Okay, thank you. Have you Thanks got for it? your shopping here. It is Thanks, a sir. pleasure for me. Okay, thank you. Thank you. Goodbye. Thank you very much. Thanks. Thank you very much, both of you, for this Welcome. conversation. Okay, I'll be moving on ahead with the next part of this activity, making a choice. Okay, so now here you will have to make a choice. You will have to deal with the customer. You will have to ask the customer what type of dress they want. मीन्स कि इसमें क्या करना है कि आप लोगों ने बताना है कि किस किस्म की ड्रेस चाहिए आपको, कौन सा कलर चाहिए. Now you have taken up a dress. You can return that dress. You can exchange it as well.
सही, तो उसमें से कलर कौन सा है? ओके, यू कैन डू वन मोर थिंग इज दैट यू कैन आस्क फॉर ब्रांड्स एज वेल, कि आप लोग जे डॉट के मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जो है ना नारकिन्स के कपड़े चाहिए, मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स के, यू कैन यूज द नेम्स ऑफ दोस ब्रांड्स एज वेल। सही। सो फॉर दिस एक्टिविटी I'll be choosing Riaz and Mala Basi. Yes. Okay, sir. Okay. And Riaz. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, I hope you got the idea of this activity. Kindly turn on your cameras and start buying clothes, I'd say. सर यहाँ पर I'm कैमरा तो ऑन customer. हो रहा है, जी। यहाँ पर कैमरा ऑन नहीं हो रहा, ओके। पता नहीं कहाँ पर है सर। रिएक्शन या ऑप्शन वगैरह ये लगे हुए हैं। माइक माइक देखेंगे, माइक के बराबर में स्टार्ट वीडियो है, स्टार्ट वीडियो माइक है ना जहाँ पर, वहाँ पे स्टार्ट वीडियो, इधर ही कैमरा है। जी सर, माइक तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, माइक के साथ सर। नहीं सर, यहाँ पर तो नहीं नजर रहा। प्रयास आप म्यूट, जहाँ से माइक ऑन करते हैं ना, माइक के बराबर में Practice देखना। me. अच्छा सर, अच्छा जी सर, जी हाँ सर, है सर, बिल्कुल जी सर, अब आ गया। Okay, जी, good, good. Okay, so Riaz, okay, I'll say you'd be the shopkeeper, I'm and shopkeeper. Yes sir, yes sir, I'm yeah, shopkeeper. and Mala, you'd be the customer. Assalamu Okay, sir. alaikum ma'am, how are you? Walaikum salam. I'm good. जी, Sir, can you please show how me want to help? some ready-made clothes? Yes, yes, Try to speak, Riyaz. Miss yes, Mala is it asking has. for ready Yes sir, ready-made yes, clothes. yes ma'am, it has. अपनी फिंगर हटा लेगा, फिंगर आपकी शो हो रही है ना। मिस Ready माला sir? आपसे पूछ रही हैं कि आपके पास रेडीमेड क्लोथ्स हैं, तो आप इसको थोड़ा सा सेंटेंस को बताने की कोशिश करें। यस मैम, वी हैव द रेडीमेड क्लोथ्स, बट यू लाइक टू, कैन यू कंफर्म योर कलर एंड द स्टफ ऑफ द क्लॉथ। इस तरह करके थोड़ा सा ग्लैमराइज करने की सेंटेंस की कोशिश करें। यस नो में नहीं करें, कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें। Yes ma'am, these are, it has. कोई इशू नहीं, बोलने की कोशिश करें। यस यस मैम, वी हैव द डिफरेंट कलर्स, रेड, ब्लू एंड व्हाइट, विच कलर डू यू वांट। इस तरह को नहीं पूछने की कोशिश करें आप। Yes, yes ma'am, we have different colors. Which colors do you have? The white, red, and many colors. You want it? Show me, sir. I like some unique colors, like which will be not like red, blue. I want some different colors. Okay. There are. Yes, Ras Puja, could you confirm please your specific color, so I will like to help out. Yes, जी ma'am, could you please your unique color, so I will like to help you. Yes, ma'am, could you tell me please? I want like some indigo with mixed red and bluish. Do you have? Yes, ma'am, we have these colors. Yes, ma'am, we have these colors. Okay, show me the colors and some cloth. Yes, it has. Yes, ma'am, we have these colors. Please, would you like to confirm which color are you looking? Like from these colors which you have, tell us. Try to ask. Yes, tell. Yes, sir. Be confident and tell. Yes, sir. Because my first time in English. No issue, no issue, no It's issue. okay, it's okay. No issue. We are here. We are here to help you. Don't need to worry about that. This is the new experience and this is the new thing you are learning. Day by day you will grow.
Don't Yes, need sir. to worry about that. Okay. we actually रियाज we actually appreciate errors here. सही है, गलतियां करें हम उसको appreciate करते हैं. सही, क्योंकि only Okay. सही you will learn from your own mistakes. So keep carry on. Yeah, carry on. I said, sir, my first time. No, it's No okay, issue. it's okay. No Great, issue. it's great. Try to speak. Try to Okay, speak much more. yeah, I like it. It's really according to my mindset. So please give me. Is it comfortable? Yes, ma'am, it's comfortable for you. Can you please tell me the price of this? And And also tell me the structure of this, the fabric of this. these are made of cotton. Cotton. But I need some silky dress as well, like chiffon and some mixed with cotton. Is there You any can other choice in your shop? No, they have to dry cleaned. Okay, so I think we should give a halt to the conversation here. So, and I really appreciate कि आप दोनों ने जो है ना इतना अच्छा role play किया, सही है. And Riaz, and I really appreciate you. No matter what, you just keep talking on. Okay, बात करें, बोलें. Even if you know कि you're saying it wrong, गलत बोलें लेकिन बोलें. सही है. That is our motivation here. Inshallah. Okay, yeah. Inshallah. Thank you. Okay, so for the next, we have a dialogue here. So I think for now we should skip. We can skip this part, but let's say चलो दो बंदों के साथ करेंगे Yes, activity. we can take. Yes, sir. We can take the two people, just Miss Yeah, Mala yeah, Basi and yeah, Mr. Iqbal. So we yeah. can do the fast because Yes, we are the class should be yes, end. We have yes. crossed the time. Okay, yeah, exactly. Mr. Iqbal and Miss Mala Basi. Okay, so Iqbal sir, as the previous, like the previous dialogue, you are the shop assistant here. You will have to say the same dialogues, and Mala Basi, you will have, you will be the customer. Acha, the point of this dialogue is कि you will have to focus on the pronunciation. सही है? Speak it. खैर जिस तरह आपको लगता है कि pronunciation जिस word की जिस तरह है उस तरह बोले. सही है? I'll help you out in pronouncing these words. चलें, start. Yes, sir. Shop assistant, may I help you? Yeah, I'm looking for a sweater. Oh, what size are you? I'm in medium size, not extra large. Okay, great. Okay. Would you like a plain sweater or something else? I'm looking for a plain blue sweater. That is Okay. blue or blue? Blue. Blue. Yeah. How about this one? Yeah, that's nice. Could I try it on? Certainly. The changing room are okay. Changing room are Over there. over there, sorry. Thank you, sir. Okay, goes to changing Thank room. you. We have another slide of this conversation. It's not ended yet. Yes. Did you see it? Kindly carry on. Yes, Iqbal sir, carry on. Yes, yes, sir. How does it fit? It's too large. Do you have a large? Yes, here you are. Would you like to try it on to see it fit? No, that's okay. Thank you. I will take it. Okay. How would you like to pay? Do you have take credit card? Yes, we do Visa, Master card, and American Express. Okay, here is my visa. Okay. Thank you. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Okay, I really appreciate it. बड़ा अच्छा किया आप दोनों ने, सही है. So let's move on to another activity, buying clothes. Sarfaz, what do you say? Should we carry Yes, this one we on need or to. skip? No, we need to skip this slide. Right? Yeah, because Yes. we have already done it 2 to 3 times. Okay, now coming towards another context of saying thank you and accepting thanks and saying welcome. Okay, so responses, we have multiple responses to thank you. That means even more than welcome. So formally, we have responses formally and we have responses informally as well.
तो जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप उसका वेलकम कैसे करते हैं? सही। आप लोगों ने अक्सर ये भी देखा होगा कि वेन एवर यू टॉक विद मी पर्सनली, जब आप लोग मुझसे बात करते हैं या थैंक्स बोलते हैं तो मैं उसको क्या रिस्पॉन्स देता हूँ कि माई प्लेजर, वेलकम, या कभी कभी बोल देते हैं, कभी बोलता हूँ माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। सही। सो दिस इज वन वे ऑफ सेइंग योर वेलकम। Another way of saying formally your welcome is you're most welcome, it is an honor, or it's an honor, I'm more than glad। तो ये क्या हो गया, these are some phrases जिसमें हम क्या कर सकते हैं, we can thank others। अच्छा, इनफॉर्मली जब आ जाते हैं कि हाउ वी सपोज टू से इनफॉर्मली यू वेलकम व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड और सिबलिंग्स, कि डोंट मेंशन इट, मतलब कि मेंशन करने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स को हम बोलते हैं ना कि जब वो हमें थैंक्स बोलते हैं कि थैंक्स बोलने की जरूरत ही नहीं है। सही। सो वी से नो, डोंट मेंशन इट, और नो प्रॉब्लम, और नो वरीज, और सिंपली डोंट स्वेट इट। सही। डोंट स्वेट इट इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट, कि उसमें हम क्या बोलते हैं कि मतलब जरूरत नहीं है, इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। डोंट स्वेट इट सिंपली मींस दैट। So we are also given example here. Okay, the video that you sent was so helpful. Thank you very much for helping me. So person B says it's my pleasure. सही। So इस एक्टिविटी के लिए मुझे एक दो बंदे ही चाहिए। एक जो है ना, एक ने कोई सेंटेंस बनाना है। First person will have to thank another person. Second person will have to say welcome. So using these words. Okay, Rahat Afridi, I'm choosing you for this activity, and Benafsha Mohammadi. Yes, Rahat and Benafsha. जी। ओके, बिनफ्शा, तो आपने क्या करना है, यू विल हैव टू से थैंक यू टू राहत। सही है, वो कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग एंड से इट। एंड राहत विल हैव टू से यू वेलकम, बट यूजिंग दिस either formal or informal phrases. Okay, sir. Yeah, go on, Chiranjeev. Okay. I just say thank you, sir. No, thank you नहीं, आपने एक सेंटेंस बोल देना, you will have to make a context। सही है, you will have to say thanks. Okay. This is very nice. Thank you. Am I right, sir? Say it again. This cloth is very nice. Thank you. Okay, so I think you are all playing or that of shopkeeper and customer. Good. So yes, Rod, kindly answer. You are most welcome. Okay, you are most welcome. Good, great. So thank both of you. Yeah. Okay. Move on. Let's move on to the next activity of congratulations. So say whenever someone is congratulating us, they say congratulations. We can answer it in these words. Answer them in these words. We can say excellent job. Say well done, well deserved, I'm thrilled for you। मतलब कि congratulations के लिए synonyms आप यूज कर सकते हैं, ये वर्ड या phrases यूज कर सकते हैं instead of saying congratulations कि you deserve it। सही है, कि तुम जो है ना ये काम डिजर्व करते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे बहुत फख्र है। वे टू शाइन, कि जो है ना तुम अब चमक उठे हो। ब्रावो, प्राउड के मतलब कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुक्रिया। सही। तो इन example you can see the first person is saying I'm so happy that you passed the exam, bravo, थैंक्स अ लॉट। पर्सन बी क्या कहता है, थैंक्स अ लॉट। तो पर्सन ई किस तरह कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने एग्जाम पास कर दिया, ब्रावो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ही इज यूजिंग द वर्ड ब्रावो इंस्टेड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। सही। सो लेट्स गो थ्रू दिस एक्टिविटी क्विकली। Usman and Mala Abbasi. Yes. So Usman, kindly you have to congratulate Mala on anything. It can be the passing of exam or anything. Yes. Yes. Mala Basi. Yes, Mala Abbasi. Mala Basi, you speak very well English. You deserve it. I'm right, sir? Yeah, could you speak again? Okay. Mala Basi, your English skill is very good. You deserve it. Good. So you deserve it. Great. Yes, Mala, kindly answer him. Thanks a lot. Yes, you can say thanks a lot, or you can say prayers all mine. You can say I'm grateful. See, so you can use different phrases. Okay. Yeah. Okay, now come the last context of condolence. See, so what is condolence? I've told you before. I'll tell you again.
कि क्या होता है कि जब कोई फौत हो जाता है किसी का, या किसी पर बहुत ही बड़ा सदमा गुजर जाता है, सही, या कोई अपने बुरे स्टेजेस से गुजर रहा होता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडोलेंस, सही। सो वी कैन यूज दीज सेंटेंसेस और दीज फ्रेजेस टू गिव कंडोलेंसेस टू पीपल। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम हियर फॉर यू, कि तुमने जो खोया है मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा अफसोस है। अब सॉरी से मतलब यहाँ अफसोस का है कि मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस है। आई एम हियर फॉर यू, कि तुम्हें कुछ भी जरूरत है मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ अवेलेबल हूँ, सही, मौजूद हूँ। माई कॉन्डोलेंसेस और योर लव्ड वंस पासिंग, कि मैं जो तुम्हारी जो चाहने वाले गुजर गए जिनसे तुम मोहब्बत करते थे, मेरी उनके साथ मेरी उनके लिए ताज़ियत है तुम्हारे साथ, सही। द थर्ड वन इज आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट सिंपैथी टू यू, कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा सिंपैथाइज करता हूँ, कि मतलब जिस तकलीफ से तुम गुजर रहे हो मुझे भी वो तकलीफ महसूस हो रही है। थिंकिंग ऑफ यू, सेंडिंग लव एंड सपोर्ट, तो दिस इज अनदर कॉन्डोलेंस, मतलब कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। सेंडिंग लव एंड सपोर्ट, तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार, सही, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ या करती हूँ। वी आर सैडन्ड बाय द न्यूज, कि मुझे ये खबर सुन के बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, तकलीफ हुई। एंड द लास्ट वन इज और हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेज, कि हमारी दिल से बढ़कर जो है ना, दिल से भरी हुई ताज़ियतें आपके साथ हैं, सही। तो ओके, वी आर ऑल्सो वी हैव ऑल्सो दीज थैंकिंग, कि हम किस तरह हम थैंक यू भी कह सकते हैं कि कॉन्डोलेंसेस के लिए, कि जब हमें कोई कॉन्डोलेंस दे तो उसको थैंक्स हम किस तरह कहेंगे। आई डीपली अप्रिशिएट योर एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, सही, कि आपने जो मुझे कॉन्डोलेंस दिखाई, जो ताज़ियत की, उस तरह क्या है कि उसके लिए मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एट दिस डिफिकल्ट टाइम, इस मुश्किल दौर में मुझे सपोर्ट देने के लिए, दिलासा देने के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपको। थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स एंड थॉट्स, कि आपने मेरे लिए जो दुआएं की, मेरे बारे में जो सोचते रहे, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। आई एम ग्रेटफुल फॉर फ्रेंड्स लाइक यू एट दिस टाइम ऑफ सॉरो, कि मुझ पे जो गुजर रहा है इस गम के वक्त में, उस वक्त में आपका साथ देना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। सो दीज वर सम ऑफ द फॉर्मल वेज। नाउ कमिंग टू इनफॉर्मल वेज, आप क्या कह सकते हैं, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड, मतलब कि ऐसे माहौल पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि जब कोई मर जाता है, फौत हो जाता है, और ऐसे बंदे के लिए जब आप कॉन्डोलेंस पेश करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे बंदा फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का नहीं सोचता, सी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बंदा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, तो वो सिंपली थैंक यू कह देता है या दैट्स वेरी काइंड, ऐसे सिंपल वर्ड्स बोल के बस चुप हो जाता है, सही। तो एक एग्जांपल हियर, कि पर्सन ए सिंग माय कंडोलेंसेस ऑन योर लव्ड वंस पासिंग, यू आर नॉट अलोन, सही, कि मेरी जो ताज़ियत है वो तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। थैंक यू टू पर्सन बी, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एट दिस डिफिकल्ट टाइम, इस मुश्किल हालात में जो आपने मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आई बी अगेन चूजिंग टू पीपल फॉर दिस वन एक्टिविटी, simple activity, yes. One will have to give condolences, the other person will have to thank you. So Arif and Binafsha, yes. Arif, okay, Binafsha will have to give condolences and Arif will have to thank you. No, thank her, sorry. Okay. Yeah. Carry on, yes. Yes, Arif. I'm sorry for your loss. I'm here for you. Okay, good. Thank Yes, Arif. you. Thank you for your support at this difficult time. Okay, good. Could you use one more sentence, then we'll move on ahead, both of you, yes. Yes, Binafsha, Okay, use sir. one more sentence of your own choice, but you can use your own creative phrase. I thinking for of you, sending love and supports. I'm grateful for you. Okay, good. Thank you very much, both of you. Let's move on to our activity 2. Okay. So now here we are given a context of borrowing a book from library. So yes, so what do we have to do? You have to come to a library to issue the book English Language Made Easy. But the book is not available in the library. तो करना क्या आप लोगों ने कि एक बंदा है, one person would be the librarian, another person would be a student of English language. सही? तो उसने क्या करना है, स्टूडेंट विल बी कमिंग टुवर्ड्स द लाइब्रेरी और वो पूछेगा किस बुक के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी। लेकिन वो बुक लाइब्रेरियन कहेगा कि इट इज नॉट अवेलेबल विद अस राइट नाउ एट द मोमेंट, एंड देन क्या है, द लाइब्रेरियन वुड बी गिविंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द बुक, हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 2 months,
और एंड लर्न इंग्लिश थ्रू ग्रामर। तो इन दोनों बुक्स की रिकमेंडेशन देगा। तो क्या करना है कि नाउ you choose one of the books and start reading. After a while another student comes back and asks you about the book. सही। तो इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने कि जब आप लोग को बुक रिकमेंड कर दी गई है उनमें से कोई एक बुक स्टूडेंट ने ले लेनी है और बैठ के पढ़ना है। मीनवाइल एक थर्ड बंदा आएगा, सही, लाइब्रेरियन का रोल यहाँ खत्म हो जाएगा और तीसरा बंदा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में। व्हाट विल ही और शी हैव टू डू कि वो फिर बुक के बारे में पता करेगा, सही है, वो आपके बारे में पूछेगा और आपकी बुक के बारे में कि बुक है इसमें क्या क्या है। यू विल हैव टू गिव देम द इंफॉर्मेशन कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, सही। So for this activity, yes, I'll be choosing 3 participants. See, so the first participant would be Rahat Afridi. See, Rahat Afridi, you would be the librarian. Riaz Ahmed, आप होंगे student, सही। And yes, Mala Abasi, you would be the third person. सही, आपने जब बाद में जो बंदा आएगा वो आप होंगी, सही। So let's start the activity. Okay, sir. Yes. And kindly I really appreciate if you turn on your camera for this activity because this is the last activity. Sir, दूसरा बंदा कौन है? Okay, the second person was Riaz Ahmed. Yes, Riaz Ahmed, Rahat Afridi, आप तो librarian हो गए। Riaz Ahmed, you are the student, सही है। तो आप जो है ना Riaz Ahmed आएंगे, you will be asking about the book Language Made Easy. जी सर। सर मुझे करना क्या है सर? अच्छा देखिए इस कॉन्वर्सेशन में एक मिनट। जी, ये किसने पूछा ये कि क्या करना है मुझे? राहत आपने कि रियाज आपने पूछा है? मैंने सर रियाज अहमद ने। ओके रियाज, तो आपने ये करना है, देखिए कि आप आए हैं लाइब्रेरी और आप लाइब्रेरियन से पूछेंगे कि मुझे बुक चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी, सही। लाइब्रेरियन आपको ये बताएगा कि ये बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं, हाउएवर हमारे पास 2 बुक्स अवेलेबल हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 2 मंथ्स, पहली बुक ये है, एंड सेकंड बुक इज लर्न इंग्लिश थ्रू ग्रामर, कि ग्रामर के जरिए इंग्लिश कैसे सीखनी है। तो आपने इन दोनों बुक में से किसी एक का नाम ले लेना है, वो लाइब्रेरियन वो बुक आपको दे देगा। फिर कुछ देर बाद जो थर्ड पर्सन है दैट इज माला अब्बासी, वो आएंगी और आपसे बुक के बारे में पूछेंगी, सही, कि बुक आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपने यू विल हैव टू बी टेक पार्ट इन द कॉन्वर्सेशन। यस, गो। ओके सर। सर प्लीज गिव मी इंग्लिश लैंग्वेज book. Okay, yeah, carry on. Which big book you want? Tell me the name of Yes, that book. English language made easy. English language made easy. Which book? Oh sorry, sir. This book is not available in the library. Okay, and second book, want to me. This book is not also available in the library. And second book, learn English through grammar. Sir, This book want to me. This is also not available in the library. Okay, Rahat, you'll have to recommend him 2 books. आपने अब इन्हीं दोनों बुक्स का बताना है कि how to learn English in 2 months and learn English through grammar की ये 2 बुक्स हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की अवेलेबल है if you want to read, सही। Okay, sir, there are many books for learning. I will suggest you you can read it. If you choose this one, then you can buy. You want to buy it? Okay, I want to English learn books. Okay, we have different types of English books. Which you want to? This is not available, sorry, but we have more English language books are available. Okay, please give me any books. Okay, we have these English books available. You can see it, and Okay, if you want to buy it, then you tell me. What, sir? If you want to buy it, then you tell me. So I not understand your language. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसको खरीदना चाहते हो तो मुझे बता दो। Okay, I bought it. Okay, sir. I want buy.
Okay. Thank you, sir. How you can pay or credit card or cash? Sir, cash, here it is. Okay. These books in 500. Give me 500 rupees. It is 500. Yeah. Okay. Okay. So now that you have bought the book, now you will be sitting and reading the book. And Mala Basi will come and ask you about the book. Okay, sir. Okay, Riyaz? Yeah. Okay, so carry on the conversation, Riyaz. Okay, Now, sir. Mala Basi, it's your time to shine. Yes, Mala Basi. First let me unmute. Yeah. Let me unmute you. Yes. Okay. Hey Riaz, what are you doing here? I'm reading a book, Okay. Which type of book you are reading? grammar type, English, for Why English you are talking. reading this book? Yes, for English talking, because my English For? is weak. For English talking, Okay. Which type of text is in this book? Context in this जी, book? yes, English grammar, English talking, mostly grammar. How much you have learnt from this book? What? How much you have learned from this book? Which things you have learned from this book? I have learned in this book. Have you learned articles? Yes, articles. Okay. And other things? Other, I try again on different things, because I said to you, my English language, English talking is weak. Okay, so Okay, carry on. Thank you. oh, good, Thank you. good, good. So really appreciate it, all three of you. So you kept a great conversation there, Riyaz. सर So मतलब कहाँ से भी आ रही है, मुझे बस मैं बिस्मिल्लाह करके जा रहा हूँ. इट्स ओके, इट्स ओके. मतलब यही है ना कि देखिए, यू विल हैव टू बिस्मिल्लाह करें एंड टेक द स्टार्ट. सही. बस फिर Okay, sir. देखिए, ईच एंड एवरी सिंगल टाइम मैं एक पर्सनल एडवाइस आप सब लोग को देना चाहूंगा कि किस तरह मैंने खुद इंग्लिश कैसे सीखी. सबसे बड़ा रोल जो था कि वो क्या करता था, मैं जब भी द फर्स्ट थिंग, देखिए लैंग्वेज आप क्या करते हैं, इवन उर्दू हो या पश्तो हो या सराइकी हो, एक्स वाई जेड जो भी लैंग्वेज, जब भी आप बोलते हैं पहले आप सोच रहे होते हैं. जिस लैंग्वेज में आप सोचते हैं ना, वही आपकी, मैं कहता हूँ कि वही आपकी मेन लैंग्वेज होती है. सही. तो अगर आप वाकई इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पहले आप सोचना इंग्लिश में शुरू कर देंगे. एंड ट्रस्ट में, ये मैं आपको 100% जो है ना एफिशिएंट तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सोचते हुए आपको कोई जज नहीं करता. ऐसा ही होता है ना, कोई देख नहीं रहा होता. सोचते हुए आप गलत भी बोलते हैं, सो के. तो सोचे, इंग्लिश में सोचना शुरू करें. सही. मैं खुद भी, मैं कहूँगा कि मेरा पर्सनली इंग्लिश के साथ इतना शौक है कि कभी कभी जब मैं गुस्से में हो जाता हूँ, तब भी ख्यालात मेरे जहन में इंग्लिश में ही आ रहे होते हैं. तो सोचना जब आप शुरू कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या अपनी टारगेट लैंग्वेज में जो आप सीखना चाहते हैं, तो वही आपको बहुत जल्दी जल्दी आप लर्न भी कर रहे होते हैं. सो दैट इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप सोचना शुरू कर दें इंग्लिश में. इंशाल्लाह यू सी योर बेटर रिजल्ट्स. तो चलें, या इंशाल्लाह. Something सो is better than nothing, sir. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सो Something is better than nothing, क्योंकि बस कहते हैं कि कुछ ना कुछ है. जी जी, आगे सीखना बढ़ना ही चाहिए. चाहिए. जी जी, एग्जैक्टली. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्टिविटी एंड ऑल ऑफ दोस हु टुक मुझे पार्ट टुडे. मुझे कुछ कहना है सर. या आप असाइनमेंट का बता दें और थोड़ा सा एग्जैक्टली. जी, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड उसी असाइनमेंट के हवाले से सर. तो इसका मैं बता देता हूँ. अच्छा, देखिए, सो द लास्ट सेकंड लास्ट स्लाइड इज अबाउट असाइनमेंट. क्या करना है इसमें कि टेल इन अ वीडियो ऑफ 30 सेकंड्स टू 1 मिनट व्हाई यू लव शॉपिंग एंड व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट शॉपिंग. अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, 30 सेकंड से 1 मिनट की वीडियो बनानी है. उसमें बताना है कि आपको शॉपिंग क्यों पसंद है. सही. आप शॉपिंग हर हर एक को अच्छी लगती है. सही. एंड व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट शॉपिंग, और शॉपिंग के बारे में आप लोग को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगता है. अच्छा, वो कोई भी चीज हो सकती है. आप कपड़ों के हवाले से बता सकते हैं, कपड़ों की शॉपिंग. आप परफ्यूम्स के हवाले से, वॉचेस के हवाले से बता सकते हैं. एक्स वाई जेड जो चीज आप लोग को पसंद हो. सही.
सो इसको 30 सेकंड से 1 मिनट में रिकॉर्ड करना है इन इंग्लिश, यू हैव टू से इट इंग्लिश। और इसी तरह मुझे जो है ना, आप लोगों ने कोशिश करें कि कल के कल ही आप लोग सारी वीडियो मुझे भेज दें, सही, ताकि मैं उनको जो है ना फिर आप लोग को मैं रिस्पॉन्स दे दूँ, फीडबैक दे दूँ। सो सर, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड सफात? यस, या आप सबके मेरे आपको 2 मिनट चाहूंगा। सारे सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर। यस सर। अ, आप लोग को हमने फेसबुक के और इंस्टा के हमने लिंक शेयर करे थे, याद है सबको? जी सर बिल्कुल। तो किस किस ने जी फॉलो करा हुआ है हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे और उस पे? सर मैंने भी किया, रियाज अहमद। ठीक है, और कोई मुझे बताएगा? सब मुझे मैंने बताएं। आरिफ सैन मैंने तो फॉलो किया, लाइक भी किया था मैं। ठीक है। अच्छा, फेसबुक पे, अच्छा मुझे ये बताएंगे आप कि आप लोग को जो आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप लोग को सही समझ आ रहा है? आप सेटिस्फाई हैं उससे? जी सर बिल्कुल सेटिस्फाई। जी सर। कोई नहीं, रियलिस्ट होके बताएं। देखें, अगर हम लोग कोई गलती कर रहे हैं या आपको कोई समझ नहीं आ रहा, तो इसमें हमारी ही एक हमारे लिए अच्छा है कि हम आपको और बेहतर तरीके से हम समझा सकें, ठीक है, जो मकसद है पूछने का। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको सर नहीं समझ मिसाल आ रहा। टाइमिंग को थोड़ा ज्यादा कर दें, कैसे? क्या कह रहे हैं आप? टाइमिंग फिलहाल जो है 2 घंटे, अगर 3 घंटे करे तो कैसे? मिसाल पता ही नहीं, पता चलता ही नहीं है कि साल टाइम कैसे गुजरता है वो इस तरह क्लास आपको में। पता नहीं चलता क्योंकि आप मुसलसल एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, एक बात बताऊं, आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, अब यूनिवर्सिटी लाइफ में आपका एक सब्जेक्ट होता है, हार्डली 30 मिनट का होता है या 45 मिनट का होता है, ऐसे ही है, सब एग्री करते हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, और उसमें भी आप 30 मिनट में भी आप बोर हो जाते हैं, ऐसा सही। ही है। क्यों? आप क्यों बोर होते हैं? आपने कभी सोचा? क्योंकि आपको जो टीचर जो पढ़ा रहा होता है, वो आपके लेवल पे जाके नहीं पढ़ा रहा होता, आपके साथ इंगेज नहीं कर रहा होता। आप देखें, आप जो यहाँ पे जो कोर्स ले रहे हैं ना, ये डिफरेंट है, मैंने आपको पहले ही जी बताया सर। था, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट को इंगेज रखते हैं क्लास के अंदर, तो इसलिए आपको मजा भी आता है पढ़ने का। हम डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पे करते हैं। आप नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपको इतना कोई इंडिविजुअली कोई इतना गाइड नहीं करेगा। इकबाल साहब एग्री करते हैं मेरे साथ? आप, इकबाल साहब आवाज आ रही है? यस सर, वी आर एग्री। ठीक है, सब सर अपने माइक एक, खोल सकते, Yes, माइक जी खोल, yes, sir. सर, Michael, 100% agree, sir. These are ठीक है। wonderful activities. Okay. तो सर हम एक यहाँ पर बात आपको, सरफाज, एक बात मैं खुद भी ऐड करना चाहूंगा। ये जो, हालांकि मैंने इससे पहले इतनी लेंथी क्लासेस नहीं ली मैंने, कि मैं 2 घंटे 2.5 घंटे तक लेता रहूं। तो मैं खुद भी, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ एट द सेम टाइम, सही। सो क्या होता है कि मैं भी जब ये 30-35 मिनट की क्लास वो कर रहा हूँ, तो इंगेज कर रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ, तो मैं बोर हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितनी कॉन्वर्सेशन क्लासेस हमारी हुई है, मैं खुद भी बहुत ज्यादा इनकी कॉन्वर्सेशन भी इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा नेचुरल होती है, गपशप वाला माहौल होता है, तो बड़ा मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आता है इनके साथ बातचीत करने का। तो आप लोग को मैं एक बात बताऊं, जब ये क्लास हमारी खत्म होगी ना, आप हमें बहुत मिस करेंगे, हमें पता है, और हम आपको भी पहले बहुत मिस करेंगे। ये हमारा एग्जैक्टली बैच 1 है, तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे राब्ते में रहेंगे। हमने आपको वही बताया कि इंशाल्लाह लाइफ टाइम इंशाल्लाह। हमारी आपकी सपोर्ट है। हमारा व्हाट्सएप पर नंबर है, इंशाल्लाह सब हो सकता है सब बैच 2 भी हमारा साथ रहे आपका. इंशाल्लाह ताला। तो बात सारी ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दें। देखें, आप नॉर्मल किसी एजुकेशन में जाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है, टीचर आता है, आपको पढ़ाता है, वो अपने हिसाब से पढ़ाता है और वो क्लास एंड करके चला जाता है। ऐसा ही है पाकिस्तान में, आप कहीं भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी इदारे में चले जाए, यौरिका में चले जाएं, आप कराची में या बर्लिट्स में चले जाएं, या किसी भी बड़े में, मैं बहुत बड़े बड़े इदारे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा भी इदारा कोई छोटा नहीं है, माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह बड़ा है। श्रीलंका में हमारा हेड ऑफिस है, हम 16 ईयर से वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी जैसे हमें 1 मंथ हुए, इंशाल्लाह ताला आगे आगे जैसे ग्रो करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग का साथ रहा, तो यौरिका क्या, बर्लिट्स क्या, तो दुनिया के हर कोने में हमारा इंस्टीट्यूट होगा इंशाल्लाह ताला। हमारा प्लान भी यही है। इंशाल्लाह तो सर, इंशाल्लाह. आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वहां पर आपको जो इंटरनेशनल लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बेसिकली देखिए, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है आपकी स्किल्स जो इस क्लास में आप हासिल कर रहे हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि आप सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखेंगे, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, और जो जो चीजें आप सीख सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके। देखें, इंग्लिश तो हर कोई सिखाता है, इंग्लिश बोलने आने चाहिए, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो सही है, वरना अदरवाइज हर कोई आएगा आपको इंग्लिश सिखा के चला जाएगा, टीचर का काम है बस सिखा दी। हम आपको देखा होगा कि आपके साथ कनेक्ट रहते हैं क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी, यानी कि आपकी जिस दिन क्लास नहीं होती आपको रिकॉर्डिंग आ रही होती है, सर बासित वॉइस कर रहे होते हैं, मैं वॉइस कर रहा हूँ असाइनमेंट के हवाले से। अगर किसी को हेल्प नहीं होती
हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल के ऊपर, ऐसा ही है? बिल्कुल सर। उस्मान कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर, टाइम के हवाले से आया था बस जरा कि हम क्या क्लास जल्दी नहीं शुरू कर सकते? क्लास जल्दी शुरू कर सकते हैं, 9 बजे शुरू कर सकते हैं अगर सारे एग्री करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी सर, सर। ऐसे ही क्योंकि असल में यस सर। जॉब करता हूँ ना, जी जी, तो ये इशू का जरा सुबह जाना भी जल्दी, अक्सर रात को भी फिर हमें करना पड़ेगा काम। कोई मसले वाली बात नहीं। तो हम कल ऐसा करते हैं सर बासित कि जी आप कंफर्टेबल हैं रात 9 बजे हम स्टार्ट कर लें? यस एग्जैक्टली सर, सर, will be मुझे सर। भी जी जी सर, मैं भी कंफर्टेबल हूँ सर। जी बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, हम एक वॉइस भी डाल देते हैं और मैसेज भी डाल देते हैं, ठीक है? ताकि जो स्टूडेंट जो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए वो रात 9 बजे आ जाए। हमारी कोशिश है कि हम इसको 8 बजे भी ले जाएं, 8:30 बजे भी ले जाएं, लेकिन रमजान टाइमिंग है, नमाज का टाइम भी होता है, आपको पता है, तो सारी ये चीजें चल रही होती है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो अगली क्लास है वो हम रात 9 बजे स्टार्ट करेंगे। और हमारी इंशाल्लाह। कोशिश कोशिश ये होती है कि सिर्फ क्लास में हम आपको क्लास ही ना कराएं, क्लास के साथ साथ हम आपको डिफरेंट एक्टिविटीज कराएं जिसके जरिए आप सीख सकें। आज जो मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, देखें यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कोई ना कोई मकाम हासिल करने जा रहे हैं, या कर सकते हैं, या सोच रहे हैं, जो स्ट्रगल करते हैं। तो जो इंटरव्यू के वाले से मैंने आपको जो टिप्स दिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये आप इसके रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, ये आपके मैं आपको खुद बता रहा हूँ। अच्छा सरफाद, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने बताई तो है, लेकिन वो सारी उर्दू में की है, तो अगर आप उसको इंग्लिश में कर दें ताकि हम उसको रट्टा लगा लें। कोई इशू वाली बात नहीं, मैं आपको इंग्लिश में भी वॉइस छोड़ दूंगा। लेकिन देखें, बात सारी बताने की ये है कि उर्दू में बताने का मकसद ये था कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें, जो जी मोटिवेशन जो सर। फील है ना वो आप जी ले सर, सकें। वो तो कर ही है, बट वो इंग्लिश में अगर हो जाए ना, तो ताकि हमें भी फिर वो मैं कोई इशू वाली हमारी बात नहीं, मैं एक वीडियो मैसेज। रिकॉर्ड करूंगा, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको एक एक्टिविटी हो जाएगी कि आप देख रहे हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू आपसे क्या क्या सवाल कर सकता है, ठीक है? आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, वेदर यू आर टीचर, वेदर यू आर बैंक मैनेजर, वेदर यू आर गोइंग फॉर द ऑफिस जॉब, फॉर द मैनेजमेंट जॉब, फॉर द अकाउंटेंट, फॉर द डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग एल्स, तो आपको ओके सर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें इंशाल्लाह ताला मैंने आपको बताई हैं, आपके बिल्कुल लाइफ में काम आएंगी। ये मेरा लाइफ का खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मेरा खुद अपना माशाल्लाह से कोई 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इंटरव्यूज लेते हुए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बड़े बड़े एचआरस हो गए, कॉर्पोरेट लेवल हो गए, उनके साथ मेरी खुद अपनी एक अंडरस्टैंडिंग भी है और उनके साथ मेरा राब्ता भी रहता है। तो जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो इंटरव्यूज भी ले रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। बेसिकली देखिए, बात सारी ये है कि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन है, और जितने खूबसूरत तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे आप उससे इसी तरह आप भी और भी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी भी खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, मैं सर वासिफ बस 2 मिनट चाहूंगा, सॉरी मुझे पता टाइम ज़्यादा हो गया। इट्स ओके मैं सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर मेरी स्क्रीन नजर आए तो सब मुझे बताएगा। यस सर, जी आ सर। रहे हैं। जी आ सर, रही नजर है। आ रही है आप। अच्छा, ये हमारा फेसबुक पेज है, आप सबने देखा होगा, ऐसा ही है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर अपना फेसबुक पेज खोल लें। ये सारे ये लिंक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, मोबाइल में खोल रहे हैं जो भी है, लैपटॉप में है जो भी है, मैं ये जूम चैट पे ये दे दिया आपको। सर बाद में। जी खोल सर लिया आपने? नहीं आया, नहीं अभी तो जूम नहीं आया, हमारे पास चैट में नहीं जूम आया। चैट में नहीं आया सर? वैसे तो आपको चैट नजर आई है? सर एक मिनट इसी। एक मिनट सॉरी, ये एक को जी चली गई, एवरी वन में नहीं आई। अब चेक करेंगे। व्हाट्सएप पे सर। जी आ नहीं गया नहीं, सर। जूम चैट नहीं पे। सर, जी सर आ जी गया। जी जी आ गया, सर, आ चैट में गई। सर आ गया। ठीक है, ये लिंक ओपन कर लिया फेसबुक का। जी सर, लाइक कर दिया। जी सर, ओपन हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक मिनट देगा मुझे। सॉरी, अच्छा हाँ, ये आपने ओपन कर लिया, आप देखेंगे आप ये पेज के ऊपर जाएंगे, नीचे आता है रिव्यू के ऊपर, ऐसा ही है? यस सर। रिव्यू खोल लिया सबने? मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन है, देखें यहाँ पर। एक नजर आई है सबको? क्लिक कर लिया सबने? तो सर मुझे नहीं मिल रहा रिव्यू। अच्छा, सर मुझे तो नहीं आप मिल रहा सर। आप पेज जैसे ही खोलेंगे ना, पोस्ट पोस्ट ऑप्शन नजर आता है, पोस्ट का जी ऑप्शन। जी। हाँ पोस्ट सर, के ऑप्शन पोस्ट नीचे नीचे अबाउट जाएंगे। वीडियो। हाँ हाँ, नीचे नीचे करेगा, स्क्रॉल नीचे करें, डाउन करें नीचे की तरफ। जी सर, नीचे की पेज तरफ। कराची वगैरह लिखा हुआ है। हाँ ऑक्सफोर्ड ठीक है, तो कॉलेज। हाँ, इसका वेबसाइट है, प्रमोट वेबसाइट, उसके बाद ये है रिव्यू।
जी सर, कौन सा? रिव्यू। नहीं सर, ये जो लिखा हुआ है स्टार स्टार के साथ नॉट येट रेटेड 2 रिव्यूज। जी सर। 2 reviews. यहाँ पे दिखाता हूँ, एक घंटे का मैं यहाँ पे खुद खोल के फेसबुक पे अपनी दिखाता हूँ। Recommended college English. एक घंटे का Yes. मुझे। सर, सी कॉलेजेस अबाउट इंफॉर्मेशंस। जी जी, एक घंटे का मुझे, 1 मिनट। अच्छा, पोस्ट के नीचे जाएंगे ना, पोस्ट के नीचे जहाँ नंबर लिखा हुआ है हमारा, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर नजर आ जी रहा है? जी सर, जी जी मोबाइल Yes, नंबर, sir. मोबाइल नंबर के नीचे स्टार बना हुआ है, ऐसा ही है? हाँ सर, स्टार बना हुआ है। Yes, उस पर sir. हाँ, उसको बस क्लिक कर दें। मैं बताऊं, असली में सबसे पहले मोबाइल ओपन है तो जी मोबाइल में जी तो अच्छा. अबाउट में जाना पड़ेगा। तो हाँ सर क्लिक अबाउट तो में सर क्लिक किया सर, एक्सक्यूज मी, क्लिक किया, ठीक है। 0.0 आउट ऑफ 5 ये लिखा हुआ हाँ है। ठीक है, तो वहां पे आके सब लोग आप ना अपनी जो भी ऑनेस्ट है वहां पे 5 स्टार रेटिंग देके अपना कमेंट लिख के पोस्ट कर दें सारे जाके, ठीक है? ताकि ये होगा कि आप लोग का एक फीडबैक आ जाएगा क्लास के हवाले से, और जो जी भी है कोई भी है तो उसको मजीद हम इम्प्रूवमेंट भी कर लेंगे, ठीक है? सर, यहाँ पर कमेंट्स तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि आ, हाउ आर रेटिंग कैलकुलेटेड। ठीक है, आप 5 स्टार दें, वहां पे आके क्लिक करें, कहाँ पर सर? 5 स्टार जाके क्लिक करें, 5 स्टार जाके। हाँ सर, आ गया सर। ये तो सर आ गया, हाउ पेज रेटिंग आ रहा, जी जी बिल्कुल, डिटरमाइन। आप उसको, हाँ उसको पेज कर दें, 5 स्टार कर दें आके उसको। सर कहाँ पर सर? ये सर, ये लिखा हुआ है वाज दिस हेल्पफुल। यस 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 कर देगा उसको। जी सर, कर लिया सर। अब ऑप्शन आ गया है लिखने का सर, नीचे जी जी सबमिट। जी, नाइस क्लास लिख देगा, गुड लेक्चर, जो भी आपको समझ आता है ना इंग्लिश में वो लिख देगा आप। जी सर, लिख लिया सर, सबमिट आवाज करें। नहीं लिखी सर नाइस क्लास लिखिए, है. सबमिट करने। सर हमने सबमिट कर अच्छा। दिया। अच्छा, आप लोग के लिए रिव्यू के लिए मैं एक छोटा सा एडवाइस दूंगा आप लोगों को कि हमने जो सीखे हैं जो फ्रेजेस, आप लोग उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक इट टू साउंड इट मोर नेचुरल। यस, तो और उसमें आप लोग को भी फायदा होगा, आप लोग उसकी यूज को और बेहतर सीख लेंगे। जी सर, इंशाल्लाह। या। सर हमने सबमिट भी कर दिया सर। ओके जी, ग्रेट। सर पीछे चले जाएं सर। ठीक है सर, फिर क्लास एंड करते हैं। बस चलेंगे इंशाल्लाह, लेट्स कॉल इट अ डे देन। और इंशाल्लाह आप लोग की फिर से नेक्स्ट क्लास होगी मैं वर्षा के साथ। तो उनके लिए भी वो आप लोग के साथ जब स्लाइड शेयर करें पीडीएफ फॉर्मेट पे तो प्रिपेयर कर लें, उनको भी सही है। और मेरे साथ जो नेक्स्ट क्लास आप लोग की होगी तो इंशाल्लाह आई सी यू ऑन फ्राइडे, तो इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन गपशप लगाते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, बाय द वे, आप लोग के लिए जी, आप लोग के लिए मैंने वो, सर जी जी, या सर मेरी अटेंडेंस का इशू बना हुआ है, वो साइन इन मेरा नहीं हो पा रहा मेरे. आई थिंक सो आई फॉरगेट माय ईमेल पासवर्ड. तो वो अगर किसी तरह अरेंज कर लें अगर आप तो. मुझसे नहीं थोड़ा, हो पा रही, 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ बट मेरी अटेंडेंस नहीं मार्क हो पाती. अच्छा और सर सर, ये और मेरे साथ भी सेम मसला है सर, सेम प्रॉब्लम है। मैंने सरफात साहब से भी डिस्कस की थी अच्छा इस बारे में। जी सर, अच्छा क्योंकि चले, मैंने कोई इशू सर नहीं, इसको सर हम देख लेंगे, इसको हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अगर अगर पॉसिबल हो तो हम सिर्फ मेल चेक चेक पे अपने नेम और साथ अटेंडेंस मार्क करके वहां से फिर आप देख लें. चले, हम इसको चैट देख रहे पे डिस्कस कर लेंगे हम इसको, ठीक है? जी सर, थैंक यू। वहां से बाकी जो, पॉसिबल नहीं है हमारा. हाँ कोई मसले की बात नहीं, इसको हम देख लें। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह फेसबुक मैंने बताया इसी तरह के सब रिव्यू दे देगा, ताकि ये कि हमारे लिए एक अच्छा हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा आपकी तरफ से, ठीक है? जी सर, ओके सर. इंशाल्लाह। और जो भी हमारे जो चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आपको नई क्लासेस की अपडेट सारी मिल सके, और सारी आपको अपडेट, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सबको फॉलो कर लें। इंशाल्लाह सर। ठीक है सर, ओके क्लास सर. एंड करते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके असाइनमेंट सर, लाजमी कर ओके लेगा। और आपने वीडियो की सूरत में किया सर असाइनमेंट, या जी, इसमें किया? वीडियो की सूरत में दिया सर। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो ऑन करके, कैमरा ऑन करके, प्रॉपर अपनी वॉइस ऑन करके जी करके आप रिलैक्स होकर बात करके और सर को सबमिट कर देगा, प्लीज रिक्वेस्ट, ठीक है, क्लास होने से पहले। ओके और सर. सर आपको जो नेक्स्ट स्लाइड है वो भी दे देंगे कल, जो क्लास जी होगी, तो आप उसको गो थ्रू करके आ जाएगा।
जो भी आपके इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह Okay, हाफिज। thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Add one more thing, please. अब सर ऑफ कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप सब लीव कर दें। थैंक यू। थैंक यू सर।